Good afternoon to all the eminent members in the panelist link, and also all the dear participants. Not taking too much of modalities today. It's a day 2 of our short-term training program titled Research and Innovation Using Technology. We have given you 1 day break to think on, to brainstorm within yourself, and to talk to your mentors and to your experts about the research problems. So the very first day, we talk about some key aspects of innovation, research, and yes, with an expert session by Dr. Kavita Indapurkar. She emphasized upon the research problem. And Rohit sir, we have made this mandatory also for the dear participants to submit the assignment, as I have posted one PPT, I think on 23rd itself. If I'm not mistaken. And in that, it was mentioned certain questions to answer with. Now, and I'm very happy to share that people have started submitting their assignments. 3 or 4 scholars so far, including our own university and from Oro University, they have submitted their assignments. So this is a good thing that research scholars, the emerging researchers are really getting into the learning process, and training process is all about. So that you should find out that at the end of the training program, what is your takeaway, what is your key takeaway. So in continuation of that, today our session is on reference management using Mendeley, which will be taken care by Dr. Srishti Chauhan. The session will in totality about the 90 minutes, wherein ma'am will give us the deep insights about the literature review, the next step of the research process, the basic things, the basic guidelines. However, you all must are aware about it, but still to refresh upon. And then she will be giving the hands-on session to how to use this Mendeley as a reference management tool. So not getting into the details of it, I will quickly hand over this dais now to Dr. Usha Sharma to welcome the August gathering once again, and also to give the brief profile of our today's resource person, and then take the modalities of entire session. Dr. Usha Sharma, heartily welcome to you. Please proceed. Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Usha Sharma, Associate Professor, Faculty of Commerce, Rabindranath Tagore University. I heartily welcome you, all panelists, all deans, HODs, Monica ma'am, Rohit ma'am, and Shashti ma'am in short-term training program on research and innovation using technology. As Sangeeta ma'am already explained, today's topic is citation management using Web Mendeley. This is the most known for its reference manager, which is used to manage and share research papers and generate bibliographies for scholarly articles. To enhance our knowledge on this topic, Ms. Srishti Chauhan is with us. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. With due permission of Srishti ma'am, I would like to share your credentials. Sure, ma'am. Srishti Chauhan is a UGC doctoral senior research fellow, currently working in the area of behavioral finance concerning the educated urban populations in the Delhi NCR region. She holds a bachelor's degree in business economics from Delhi University and master's degree in economics from Jamia Millia Islamia University, Delhi. She had cleared the UGC JRF examination and in 2015, her recent work involved devising an index of financial literacy and studying associated retirement confidence along with the financial planning for retirement behavior. Her research interests include household finance and retirement-related gerontology, and she finds learning diverse research methodologies riveting. Now, I am very thankful to Srishti ma'am to join us. Now, this time for you, Srishti ma'am. Please continue, ma'am. Over to you, Srishti ma'am. Thank you, Usha ma'am, for the introduction. Thank you so much. So, good afternoon, all dear participants and the panel members. I welcome you all for the session on reference management using Mendeley. So, I hope that
with this session, the objective is that first to introduce you to what the Mendeley program is all about, what the application is all about, and at the same time, it's not just a reference manager, although it is generally known that it is, it's the major task is generating references. But today and even tomorrow, we will learn that how these are just, it is much more than that basically, and how it can help you in your research right from the beginning till the end. All right. Okay. So let's first talk about literature review. So yes, day before yesterday, as Kavita ma'am had emphasized on problem identification and setting of objectives. So to take it further, that whenever we as researchers, when we start our research, our mentors, our supervisors, they tell us to actually do literature review. So literature review becomes a very crucial term, a mantra to understand the research with very wholesome depth, right? So what exactly is literature review? So let us see. So basically, literature review, it actually includes reviewing surveys, books, scholarly articles, other sources which are relevant to a particular issue or area of research, or involving theory, and it provides a very holistic description, summary, and critical evaluation of these works in relation to the research problem being investigated. So I'm sure that a lot of you would be from diverse fields, be it commerce, be it economics, be it the overall management studies. So basically, the area of research varies from discipline to discipline, and even within a discipline, there is a wholesome amount of variety in terms of the diverse topics that one tends to research upon. But the research process, as ma'am had discussed, the research process somewhat remains the same, right? So the path that one follows to right from problem identification to setting up of objectives to actually exploring variables, methodologies, to understand how their framework or building a model of their own to actually test it empirically or qualitatively, and then to finally have relevant findings and and interpretation of those findings. So this is a wholesome process that research involves, right? So with that, literature review becomes a very relevant aspect of, I mean, it is going to not just, generally it is assumed that literature review is just the starting of the research, when we have to say search a particular topic, and when we have to, understand our area of research, we do literature review, and then we proceed with our other things. But no, literature review is something that starts from day one, and it eventually it does not leave you. It continues till the end of the research, because even if we are done writing our thesis, or producing, say, our report, but even till that day, whatever is the latest happenings, whatever is the latest research which is produced by other researchers, is actually included to find, to understand अगर हमारी एक particular interpretations हैं, findings हैं, and even suppose a week before there is a paper which somewhat presents a contradictory sort of a finding in relation to our research, we'll still mention it. So it is something, it is not about just reviewing papers that have been presented or say written in the past, but it is up to the very recent work that has been done, right? So why do we do it? We do it to discover what has already been written about a topic, of course, and to determine what each source contributed to the topic, right? So let me take an example of the area of behavioral finance, right? Now, when I talk about behavioral finance, it is very vast. So it also talks about investor behavior, investment decision making. It also talks about, say, household finance, right? So behavioral finance is very vast in its approach. So, for example,
first one has to understand their area of research, a very broad area. For example, in my case, being behavioral finance, then I had to understand that what kind of a behavior I want to study, and among which, what is my target population, right? So again, to take it further, I thought, all right, saving decision of individuals, it is one aspect of behavior finance, and especially among the urban population, right? So this is how one narrows the research process, right? One narrows the research area and topic, right? So in order to understand, then I have to first understand that what all has been written about a topic, what are the various theories that actually drive behavioral finance. For example, there are so many biases, which is representative bias, heuristics. I'm talking about my area particularly, but to generalize it, I hope you'll be able to put it into perspective. So these are the various theories which actually pertains to behavioral finance. Then I had to understand that what are the various who are the pioneers who have worked in that particular area. For example, be it Kahneman, Tversky, be it for example, for similar related areas, who all are the pioneer researchers who have had a majority chunk of original authentic work that has been done in that area. So I need to identify them, that I need to understand what are the theories that they have presented, right? So to determine that what each source has contributed to the topic, what has been their contribution to the topic, right? And in a retrospective manner, this is all about, as we say, literature review is adhyan. At the end of the day, we have to take it into, we have to be, we have to start from a very broad perspective and eventually narrow it down to understand to the very niche area, or rather the topic that we want to target. Now, it also helps to understand the relationship between various constructs, variables, and to identify similarity, contradictions, and to determine the gap, or again, to formulate our research questions. Now, for example, when it comes to saving behavior of individuals, there are demographic variables. For example, be it age, be it in terms of education status, or be it in terms of income, that affects the saving behavior of individuals, right? And secondly, there could be, these are the demographic variable. There could be psychological variable. For example, saving behavior may be determined by how confident an individual feels about having enough security for their retirement years, for example. So this is a psychological variable. Confidence is a psychological variable, right? Then we can have economic variables in terms of wealth, in terms of income. So that also overlaps with the demographic ones. So there are, and social variables, cultural contexts, because the behavior as a whole is determined by a gamut of variables that are intertwined, interrelated. To understand all of this, we need a thorough understanding of literature. And one more thing, it might be interdisciplinary also. For example, suppose I am from economics and this area is behavioral finance, but when I talk about, say, retirement, then I delve into, say, psychology also, retirement psychology. There are other sort of variables that take its relevance from psychology literature. Then there could be, say, medical sciences, health behavior, right? So for example, if somebody who thinks that I am not healthy enough, or maybe I don't think that I'll be healthy enough during the retirement and I would need more medical care, then maybe that person saves more. So I'm just to give a very vague idea, to give a very vague idea of the whole thing. I'm just telling you that how this whole process works, right? So let me, this is what it is, that choose a topic. Now, Srishti, yes, ma'am. I'm a little bit sorry to intervene, but I think you can use both the languages, a little bit in English, because those who may not be able to understand fully English will be deprived of your knowledge. So you can use All mix right, of ma'am. language. Okay, That will be much thank better. you. Thank you, ma'am, for the feedback. Thank you. Okay.
So I was talking about the steps in the literature review. So first of all, as I said, that you have to choose a topic. आपको एक अपना एक broad area of research और अपना topic choose करना है. So for example, it cannot be too broad. For example, if I say saving behavior of individuals, right? So what still it seems that all right, it is narrowed down, but no, saving behavior of what individual? Am I talking about adolescents? Am I talking about adults? Which category of people? Am I talking about rural saving behavior or urban individuals? So what is my target population, right? Or so generally there are, when a researcher picks up a topic, then we see that it should not be very broad, or it should not be too narrow. For example, अगर suppose क्वालिटेटिव स्टडीज में एक स्टडी है जैसे एथनोग्राफी टॉक्स अबाउट अ वेरी निश एरिया ऑफ पीपल, राइट? सो फॉर एग्जांपल इट कुड बी अ ट्राइब इन अंडमान, उनका अगर हम बिहेवियर पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड एथनोग्राफी. सो एथनोग्राफी इज एन एक्सेप्शन इन द सेंस दैट इट इज too narrow. It is about a very specific group. But if in general, when we talk about other kind of studies, say an empirical study in which we want a good enough sample size to be able to have reliable estimates. अगर हम एक एम्पेरिकल स्टडी लेते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, तो हमें जनरली एक अच्छा ब्रॉड सैंपल, गुड अमाउंट ऑफ सैंपल साइज लेना होता है. तो उसके लिए फिर हमें वी हैव टू चूज दैट इंडिविजुअल्स विल हैव टू बी adequate number of individual, or sample size has to be adequate. So it cannot be too broad or too narrow. So that means it should be manageable, right? Now, एंड टॉपिक जब हम सर्च करते हैं तो उसमें कीवर्ड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट सेविंग बिहेवियर्स, तो अगेन सेविंग्स, बिहेवियर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? नाउ define the scope of review. Now, number of studies, comprehensiveness, now timeline of studies. जब हम अपना रिसर्च स्टार्ट करते हैं, हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर्टिकुलरली स्टार्ट करते हैं, तो हम एक जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड इन अ टैब्यूलर फॉर्म, wherein the each time जब हम एक स्टडी को पढ़ते हैं पूरे एक पेपर को, तो हम उसके ब्रॉड एरियाज, जैसे फॉर एग्जांपल कब एग्जैक्टली टाइम पर ये स्टडी कंडक्ट की गई थी, कितनी ये स्टडी, ऑथर कौन है, एंड what are the variables इन्होंने जो लिए, फिर उसके बाद what is the methodology that they have chosen, and what are their findings and interpretations. तो इस तरह से हम tabular format में लिख सकते हैं. So basically आपका review has to be very comprehensive, right? It should include all the major aspects. Then again, the next thing is choosing the databases and gathering sources. Basically, the idea is that review of literature has to be very good quality. It has to be very authentic. So जो choose करेंगे पढ़ने के लिए जिनपे articles, they have to be very authentic. For example, major publishing houses like Elsevier, like Emerald, like Wiley, or Taylor and Francis. So these are very well-known, publishing houses, companies, which basically have a plethora of journals, and which are multidisciplinary. So they also cater to, say, public health, medical sciences, social sciences, and finance, management. So बहुत ज़्यादा multidisciplinary होते हैं. So we have to see कि हमारा जो area of research है, वो कौन से डेटाबेस ऐसे हैं जहाँ पर वो एरिया ऑफ रिसर्च हमें अच्छे पेपर्स मिल सकते हैं. सो रिव्यू का वो भी एक एस्पेक्ट है, right? So finding the right paper, right journals for your review of literature is equally important. Then talking about evaluating these sources and resources. So evaluation means, again, as I said, type of sample, what kind of individuals, or say household study है या individual level पर है, what are they studying, variables क्या है, methodologies क्या है, results और conclusions क्या है. So as you can see, it is more like a pyramid, that first you have theoretical foundation, then you go on to studies that are generally related, that then you further narrow it down to the studies which are of similar topic, population or research design jinka similar ho, and then finally you solve the puzzle and eventually come up with your own topic area
and understand all the various aspects that we have talked about in terms of methodology क्या है, क्या हमारे variables हैं, हम कैसे अपना हमारा रिसर्च फ्रेमवर्क क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है, उसको हम नैरो डाउन करने में बहुत हेल्प होता है। ऐसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर, अगर हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वी विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम एंड इट विल नॉट बी कम्बरसम। स्पेशली इफ वी से अगर पीएचडी की अगर 4 to 5 years अगर हम देखें, तो उसमें अगर जनरली जिन आइडियाज से हम स्टार्ट होते हैं और बाय द टाइम जब हमारा काम कंप्लीट होता है या मिड तक पहुंचता है, तब तक बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं फ्रॉम व्हाट वी स्टार्टेड विद। सो वी नीड टू हैव अ ट्रैक in order to track it all down, that how we started, what are the things, ideas that we started with, and how we have evolved it to come to our present study, or our present status of the study. It is very important to have a very organized and good literature review. So why am I telling you about literature review is that Mendeley, it basically helps you to organize your literature review, right? So let's see. Okay, so Mendeley mein basically there are two things. First is Mendeley Web. Mendeley Web is nothing but it is an online version of Mendeley, right? It is online. For example, जैसे आपका Gmail account है, Facebook account है, all the other social media platforms है, या कोई भी application है, similarly Mendeley की भी एक application है जो कि online है, right? I hope PPTs में मैंने ज्यादातर चीजें इंक्लूड की हैं in terms of step by step. For example, okay, so right from here, this is the link that all of you have to follow. So आज basically the idea is that first I'll do a little bit of theory, little bit of just theory part, and then we'll do the hands-on, right? For each of them. Each of the two parts that I will cover today. So first things first, Mendeley Web. So Mendeley Web is an online version of Mendeley. And Mendeley kya hai? Mendeley is basically, it talks about, it basically is an application which helps us to organize our review of literature, to actually generate very meaningful references, bibliography for our work, for our papers when we write papers. And there is much more to it. So let's just explore it. All right. So link has been given here. And what I've done is I have also included this part. These are the screenshots. So first is this. When you go to this link, this is the screenshot that I have added, wherein your screen will look like this. Then there is an option that you create a free account first, as usual. Whenever there's a new application, you have to create an account, give your credentials, and then create a login account, right? You create a free account with Mendeley. And importantly is this, that this application is absolutely free, right? Up to 2 GB of storage in your library, it is free. All right. Then when you create a free account, suppose, and you have done creating your account, you go to this, this particular platform will open. And mind it, Mendeley is a product of Elsevier, and Elsevier is basically, it is a publishing house, a publishing company that has Science Direct and a lot of different journal. And they also own Scopus, right? So Scopus is nothing but a repository. I hope a lot of you have heard about Scopus. So Scopus index papers होते हैं या journals होती हैं, right? Journals होती हैं. So Elsevier is basically is the company that actually owns Scopus, Mendeley, and Science Direct. Science Direct is the place wherein all the journals are listed and the papers are also there. Right? Scopus में, if you have seen or if you have observed, Scopus में generally papers नहीं होते. Scopus में सिर्फ और सिर्फ journal name और paper होता है. उसमें आपको PDFs नहीं मिलते, full papers नहीं मिलते, because it is a repository, and it basically has the bibliography or the reference is there whenever you see, but you don't access the full paper on Scopus. Right. So Elsevier is the parent company that owns Mendeley. Therefore, how it helps, I'll tell you. All right. Now,
So when you complete this formality, this is the Mendeley. The third thing here, this is your Mendeley interface that will open Mendeley web. All right. Now this is, for example, logged in. So my name, with my name, it is logged in, and this particular one, fourth one, is the next interface that will open, and we'll talk about it, what everything means. Okay. Now talking about, okay, so I'll go a little slow, given that some of you have not heard about these ideas. Basically, uh, whatever I'm talking about, a lot of it also goes with, how to search the literature, and how to do a very very relevant review of literature, which is right now beyond the scope of this particular webinar. But I will try to be slow, and I will try to explain those little bit of those aspects also. So okay, now so Mendeley web. So Mendeley web, basically Mendeley web में एक हमारा Mendeley search का option है. There is web library, there is your own profile. Like जिस किसी भी application में जैसे आपका खुद का profile होता है, वैसे ही यहाँ पर भी आपका एक profile होगा. यहाँ पे groups create कर सकते हैं, और यहाँ पे data sets का option भी होता है. Okay, so enough of you must be thinking that since it's new to you, then how do you do this? No, we won't. I won't bother you much again with this. So let us directly go and see what it is. Okay. All right. Let me share my other screen. Okay. So okay, so I hope because links I have added in the PPT, मैंने PPT में links डाले हुए हैं, तो किसी को भी अगर कोई problem होती है तो they can refer, and there is tomorrow also. So whatever process we do today, I would highly request all of you to do it today itself, so that if there is any problem, we can talk about it, resolve it tomorrow. Okay. So talking about this, create a free account. For me, I already have an account on Mendeley, right? So I will sign in. Okay. So I would really request you to first, whenever you create a Mendeley account, kindly ensure that the credentials, मतलब login ID, जो email ID है आपका, और password, वो आप एक सिमिलर रखें सबके लिए. फॉर एग्जाम्पल, जितने भी अभी हम जो भी लॉग इन करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके लिए आप एक कॉमन आईडी और पासवर्ड रखें, और अपना जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो आईडी है वो यूज ना करें, बिकॉज सपोज अगर ओवर टाइम वो चेंज होता है या कुछ है, so it will create problem. So it is better that you have one email ID which you have as a constant for always, right? So email ID और password आपको डालना है. So this exactly, I hope you all can see this exactly. ये मेरा Mendeley library, ये मेरा Mendeley का पूरा एक this is my interface for Mendeley, right? It's an online version. Okay. Now let's first see. Most importantly, जैसे मैंने कहा कि Elsevier के जो एक पब्लिशिंग हाउस है, उसके अंडर बहुत सारी जर्नल्स आती हैं, एंड Elsevier बहुत ज्यादा रेप्यूटेड है. ओके, सो अगर आपने रिसर्च अपना प्रोसेस शुरू किया है, जिन लोगों ने रिसर्च अच्छे से ये प्रोसेस किया है स्टार्ट, उनको पता होगा डेफिनेटली Elsevier के बारे में. Okay, and otherwise you can go today and check what all are the various products of Elsevier. You can check it out today. Okay, so basically with Mendeley, it is able to search. It also gives you an option to search for articles, और ये वो articles होंगे जो कि Elsevier के अंडर जो journals हैं, ठीक है, उसमें आप सर्च कर सकते हो. तो कोई भी आप कीवर्ड डालो. फॉर एग्जांपल मैं डालना चाहती हूँ फाइनेंशियल
literacy. I want to add. I want to search for articles related to this. Okay. So see, as you can see, यहाँ पर ईयर वाइज सर्च है कि अगर सपोज मुझे मुझे स्टार्टिंग से लेके मुझे टाइम का कोई कंट्रोल नहीं है मुझे सपोज लेकिन यहाँ पर सपोज लास्ट 12 मंथ्स के पिछले एक साल में जो भी पेपर्स पब्लिश हुए हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वर्ड को लेकर अपने टाइटल में वो मैं या एब्स्ट्रैक्ट में वो मैं जानना चाहूंगी. ऑलराइट, नाउ सो दीज फॉर एग्जांपल ये जापान का कोई पेपर है. Okay. Somebody is asking me, is it like Google Scholar? Google Scholars will have papers from different publishing house. उनमें Emerald भी होगा, उसमें अलग-अलग टेलर एंड फ्रांसिस के पेपर्स भी हो सकते हैं. पर यहाँ पर ज्यादातर जो एल्जेवियर के अंडर जो जर्नल्स हैं उसके पेपर्स होंगे. सो गूगल स्कॉलर इज ब्रॉडर, आई वुड से, राइट? इट्स ब्रॉडर इन इट्स कवरेज, ऑफ कोर्स. Okay, so लेकिन it is a good way because जितने भी generally it is these are very reputed journals, right? These are very reputed journals that will be a part of it. Okay. Now, so for example, financial literacy के ये कुछ papers आए हैं. So you know it is in that order कि पहले 2020 के papers. So it's that ways you can see so many papers, right? Now some of them are open access, some of them are not open access. So depends आपका जो organization है, जो आपका college है, वो कितना उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो institutional access के तहत वो फ्री होगा, ओपन एक्सेस होगा आपके लिए. अदरवाइज जनरली पेपर्स ओपन एक्सेस कुछ होते हैं और कुछ नहीं भी होते, राइट? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन एक्सेस है, पीडीएफ अवेलेबल है, राइट? तो ये है जर्नल. इट गिव्स यू द जर्नल नेम, ठीक है? ऑथर वाइज अलग अलग फिल्टर्स आप डाल सकते हो. अगर आपको सिर्फ ओपन एक्सेस ही देखते हैं तो आप यहाँ पे ओपन एक्सेस चेकलिस्ट चेक कर सकते हैं, तो ओपन एक्सेस आ जाएगा, राइट? तो मोस्ट रेलेवेंट है ये. दीज आर द मोस्ट रिसेंट, राइट? अब ये बिकॉज यहाँ पर एक और चीज है, जो पेपर्स अगर पब्लिश नहीं हुए बट दे हैव बीन एक्सेप्टेड, इवन समटाइम्स दे आर आल्सो विजिबल हियर, राइट? दैट हैव नॉट बीन पब्लिश्ड बट दे हैव बीन accepted for publication, even they come under they are also visible a lot of times. अगर आप स्कोपस में भी देखेंगे तो ऐसा ही होगा कि अगर वो पब्लिश नहीं हुआ but it has been accepted. Now this is the most cited ones. So again, जब मैंने कहा कि जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं और हम देखते हैं कि हम ज्यादातर रेलेवेंट काम किसका हुआ है, who are the ones, तो साइट करना मतलब क्या होता है? अभी हम साइटेशन कल करेंगे, बट साइट करना क्या होता है कि किसी के काम को क्रेडिट देना. सपोज कोई ऑथर है, हम अपना एक पेपर लिखना चाहते हैं और उसमें हम किसी और ऑथर को उसके काम को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि सपोज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, ये किसने इसके बारे में बात की. और अगर हम अपने पेपर में सपोज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी में लिख रही हूँ तो मैं इस पेपर को साइट करूंगी, राइट? क्योंकि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट काम किया है इस पे. और क्योंकि यहाँ पर साइटेशन इसमें सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स ये एक बहुत ही रेलेवेंट काम है और ये मुझे पढ़ना चाहिए, राइट? ये पेपर मुझे मिस नहीं करना चाहिए मेरे एरिया के हिसाब से, फाइनेंशियल लिटरेसी के हिसाब से. ऑलराइट, तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं. तो सर्च का ऑप्शन बहुत रेलेवेंट है इसमें, क्योंकि एल्सेवियर में मैंने जैसे कहा ज्यादातर जर्नल्स आर वेरी गुड क्वालिटी जर्नल्स, राइट? गुड, दैट दे हैव अ वेरी ऑथेंटिक एंड गुड काइंड ऑफ अ कंटेंट. ओके, नाउ okay, now talking about library. Okay, first let's talk about library. So search का option हो गया. Now comes library. Let's see what library means. Okay, now Mendeley का जो web version है वो generally बेसिकली एक तरह से ये हमारा, जैसे हम सारे अपने, जब हमें कोई पेपर पढ़ना होता है और जनरली हम क्या करते हैं, हम उसका पीडीएफ सेव करते हैं अपने डेस्कटॉप पे, राइट? अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे हम उसका पीडीएफ सेव करते हैं और उसको पढ़ते हैं, एक फोल्डर में डाल देते हैं और उसको पढ़ते हैं, राइट? एक एक पेपर जब भी हमें लगता है हम वो पेपर्स उस तरह से पढ़ते हैं. बट
बेसिकली मेंडले क्या करता है, मेंडले आपकी एक लाइब्रेरी क्रिएट कर रहा है जहां पे आपके सारे पेपर्स आपको दिख जाएंगे, राइट। ये सारे पेपर्स मैंने अपनी मेंडले की लाइब्रेरी में डाले हुए हैं, ये मेरा ऑनलाइन वर्जन है, ओके। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पेपर है, ठीक है, मैं उसमें मैं उसको एज अ रेपोजिटरी बनाना चाहती हूँ, लाइब्रेरी अपनी डेवलप करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं ऐड न्यू। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐड न्यू में, यहाँ पे है फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर, ऐड मैनुअल एंट्री, इंपोर्ट लाइब्रेरी। अब मैं इसके बारे में बात करती हूँ। इसमें मेंडले में ये ऑप्शन है, वेब में भी, मैं जो डेस्कटॉप है उसके बारे में बाद में बात करूंगी अभी आज, लेकिन वेब में क्या ऑप्शन होता है कि ये आपकी रेफरेंसेस मतलब आपके एक पेपर की जितने भी मेजर बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स होती हैं, जैसे ऑथर कौन है, जैसे ये मैंने इस पे क्लिक किया और ये आ गया इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर आर्टिकल की क्या है, ओके, ऑल राइट। सो आई से दैट फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा फर्स्ट रेफरेंस है और जब मैंने इसको क्लिक किया तो साइड में एक इन्फो आ गई। इन्फो का मतलब है कि जर्नल का आर्टिकल का नाम क्या है, ये इसके ऑथर्स हैं, दिस इज द जर्नल नेम, ईयर ये है, और ये दिस इज द पेज नंबर, दिस इज द वॉल्यूम एंड द इशू, ठीक है। ये जनरली कोई भी आर्टिकल जब पब्लिश होता है तो उसके ये बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स होते हैं, राइट। जर्नल हमको वो प्रोवाइड करता है, राइट, एज ऑथर्स वी गेट दिस। और सबसे पहले क्या होता है, जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी करते हैं तो एक एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि किसी भी पेपर का एक निचोड़, एक समरी दी होती है, राइट, जिसमें कि हमारा फर्स्ट 2 लाइंस होती हैं अबाउट व्हाट द दिस पेपर विल एक्सप्लोर, नेक्स्ट 2-3 लाइंस होती हैं हाउ इट विल एक्सप्लोर, व्हाट एग्जैक्टली आर द फाइंडिंग्स, व्हाट आर द रेलेवेंस ऑफ दोज फाइंडिंग्स, और आगे फ्यूचर काम कैसा होगा, राइट। एब्स्ट्रैक्ट का ये मतलब है। तो इसमें हमारा पूरा ये ऐसे एब्स्ट्रैक्ट भी आ जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टैग्स। टैग्स जैसे आपको ज्यादातर पता होगा कि कीवर्ड्स की तरह होते हैं। अब सपोज इसमें ऑलरेडी कोई टैग डला नहीं हुआ था, ठीक है, तो मैंने डाल दिया, सपोज किसके बारे में है ये पेपर, इट इज अबाउट प्रोटेक्टिव बिहेवियर, ओके फाइन, तो मैं डाल देती हूँ प्रोटेक्टिव बिहेवियर, ये मेरा कीवर्ड हो गया। मैंने आपको बताया था कि जनरली कीवर्ड बहुत रेलेवेंट होता है। कई बार जब सर्च करते हैं कहीं पे भी कोई पेपर, जब किसी सपोज मैं एमरल्ड के अंदर जब जाती हूँ और मैं कीवर्ड सर्च करती हूँ, तो कीवर्ड से जितने भी वो पेपर्स हैं जो कि उस एमरल्ड की रेपोजिटरी में उस कीवर्ड से सेव्ड हैं, दोज पेपर्स विल ऑटोमेटिकली बी आई बी एबल टू एक्सेस दोज पेपर्स। तो कीवर्ड सर्च होती है। अब इसमें क्या है कि अगर सपोज ऑटोमेटिकली कोई कीवर्ड्स इंपोर्ट नहीं हुए इसमें, तो मैं, क्योंकि पूरा प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगी, अभी आपको मैं बेसिक इंटरफेस समझा रही हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ऑल राइट, ओके। तो प्रोटेक्टिव बिहेवियर इज अ कीवर्ड, ऑल राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइल्स। फाइल्स मतलब यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है कि पीडीएफ इज अवेलेबल, मतलब जब मैंने उसको डाउनलोड, सपोज मेरे डेस्कटॉप में कोई कहीं पे फोल्डर में ये डाउनलोडेड था, तो मैंने इसको अपलोड कर दिया डायरेक्टली इसमें। वो कैसे करूंगी मैं अभी बताती हूँ। तो यानी कि इसका मतलब जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है, इसमें लिखा हुआ है, राइट। नाउ देन उसके बाद यूआरएल जनरली होता है कि वो पेपर, अगर मैं इस पे जाऊंगी तो ऑनलाइन वो पेपर खुल जाएगा। डीओआई, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, हर पेपर में जो अच्छी जर्नल्स हैं वो आपको डीओआई हमेशा प्रोवाइड करेंगी। तो डीओआई आपके पेपर का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, नंबर हुआ, ठीक है, जैसे हमारा आधार कार्ड है हमारे लिए, वैसे ही पेपर के लिए जो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो है डीओआई, राइट। सिमिलरली ISBN ऑफ दैट पर्टिकुलर जर्नल, ये सब हमारी क्या, इसको हम बोलेंगे बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पेपर में बहुत ही क्रिस्प तरीके से, बहुत ही आराम से हमें, सपोज मेरे को ज्यादा उस पेपर को एक्सप्लोर भी नहीं करना पड़ा,
मैंने देखा, क्लिक किया, मैंने देखा ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, मैंने थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया, मुझे याद आ जाएगा एग्जैक्टली कि कैसे क्या था इस पेपर में, राइट। उसके अलावा और फंक्शंस है, बात करते हैं वन बाय वन, लेट्स टॉक अबाउट इट। नाउ पहली चीज, सबसे पहली चीज है दैट आई वांट टू ऐड पेपर्स, और मे बी आई वांट टू ऐड ओनली रेफरेंसेस। ये दो चीजें आप समझिए, मेंडले में सिर्फ पीडीएफ अपलोड हो सकते हैं, ठीक है, तो वर्ड डॉक या कोई एक्सेल, ये फॉर्मेट्स वो नहीं लेता, वो सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ लेता है। ओके, नाउ इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारे पास ऑप्शन है, जो ऑनलाइन वर्जन है उसमें ऑप्शन है कि हम पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं, हम रेफरेंस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को पीडीएफ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस चाहिए, मतलब ये बिब्लियोग्राफिक डिटेल चाहिए, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो लेट्स सी कैसे। अब ये आपने, जब आपका मेंडले वाला इंटरफेस था उसमें आप लाइब्रेरी पे गए, लाइब्रेरी पे जाकर आपका ये ऐड न्यू आ गया। ऐड न्यू मतलब लाइब्रेरी में मुझे पेपर्स ऐड करने हैं या रेफरेंसेस ऐड करने हैं, ठीक है। नाउ व्हेन आई से ऐड न्यू, मैं जाती हूँ फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर। अब मेरे पास एक ना डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना हुआ है मेंडले वर्कशॉप के नाम से। इस मेरे ऑलरेडी 2 पेपर्स यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे सेव्ड है, सो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको अपलोड करूँ। ओके, तो मैंने ऐड न्यू किया, मैं फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर पे गई, मैंने वो फोल्डर में से ये सपोज फर्स्ट वाला डिजिटल नजिंग वाला ये मैं चेक कर लेती हूँ, इसको मुझे ऐड करना है। ओके, नाउ व्हेन आई हैव टू ऐड इट, आई विल ओपन इट। So let me just open. So it says uploading one file and it says one file uploaded. Okay, where is that file? Let me see. अब इसमें एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, जब मैंने अपलोड कर दिया, मैं आ गई ऑल रेफरेंसेस, उसके बाद रिसेंटली एडेड। क्या मैं देख सकती हूँ कि रिसेंटली एडेड कुछ हुआ है? हाँ हुआ है। जैसे कि ये जैसी का पेपर था डिजिटल नजिंग पे, ठीक है, और मैंने कब ऐड किया? अभी 3 PM के अराउंड मैंने अभी अपलोड किया। सो ये पेपर मेरा आ गया, और क्योंकि मैंने पीडीएफ अपलोड किया तो मेरा पीडीएफ फाइल यहाँ पे आ गई। सो ये रहा, इसको मैं अगेन आई कैन डाउनलोड इट टू माई डेस्कटॉप यूजिंग दिस साइन, ठीक है, और ये साइन का मतलब ये है कि पीडीएफ फाइल इज अवेलेबल। ओके, नाउ व्हाट यू डू इज, सो यानी कि ऑल रेफरेंसेस में जो लेटेस्ट होता है जनरली वो आता है, और रिसेंटली एडेड मतलब कि जो आपने लेटेस्ट अभी ऐड किया है वो आ जाएगा, राइट। नाउ अभी इसके आगे ग्रीन डॉट आ रही है, ग्रीन डॉट का मतलब है मैंने इसको रीड नहीं किया। अब रीड कैसे करेंगे? सपोज मेंडले आपको ऑप्शन देता है कि आप ऑनलाइन अपना पेपर रीड कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो मैंने आपको ये ऑप्शन बताया था, इसका मतलब था कि आप बस देख सकते हैं कि अच्छा डिटेल्स क्या है, बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स, प्लस आप चेक भी कर सकते हैं जब कोई पेपर अपलोड हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे वन सिंगल क्लिक किया तो फिर से ये आ गया। ऑल राइट, तो अब इसका मैं चेक कर सकती हूँ कि क्या ये सही है। ओके, अब मैं इसमें से इसको मुझे एक कैटेगरी भी डिफाइन कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने वो कई बार पीडीएफ जब अपलोड करते हैं तो सारे जो बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स हैं या फिर इन जनरल जो आर्टिकल की डिटेल्स हैं वो कई बार नहीं आती हैं, राइट। सो वी कैन ऑल्सो इंक्लूड जर्नल आर्टिकल। ओके, सो मैंने जर्नल आर्टिकल किया, और आप देख सकते हैं अब यहाँ पर द मोमेंट आई एम मेकिंग एनी चेंजेस, यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली सिंक हो रहा है। कैन यू सी दैट? इसका मतलब है कि दिस इज एन, एज आई सेड, मैं ऑनलाइन वर्ड पे बार बार एम्फेसिस कर रही हूँ, दिस इज द ऑनलाइन वर्जन। यहाँ पे सारे जो चेंजेस मैं करूंगी वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे, ठीक है, वो सिंक हो जाएंगे। ओके, नाउ और ये अगर मेरे को लगता है कि अच्छा सिंक हुआ है या नहीं हुआ, मैं इस पर जाऊंगी, इसमें दिखा रहा है कि लास्ट सिंक 0 मिनट्स अगो, दैट मीन्स सिंक्ड है, और जब सिंक हुआ था तो अभी ग्रीन कलर का साइन आया था। ओके, सो सपोज ये सारी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर रीड, अगेन आई हैव द पीडीएफ तो आई कैन रीड इट। एब्स्ट्रैक्ट आ गया, फाइल्स में आ गया डिजिटल नजिंग, राइट, फाइल्स मेरी यहाँ पे, इसका मतलब अवेलेबल है, यानी कि जो पहले वाला पेपर था उसमें मेरी फाइल अवेलेबल नहीं थी, बिकॉज यहाँ पर भी कोई फाइल नहीं है और यहाँ पर गेट पीडीएफ है, सॉरी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर है नहीं पीडीएफ, और इवन फाइल्स में भी कोई फाइल नहीं दिख रही, राइट। तो अब जब मैं गेट इसमें फाइल वाले में ऐड करूंगी तो अगर मेरा पेपर मेरे पास डेस्कटॉप पे होगा तो मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ, आई कैन ऐड इट।
right? But I don't have this paper with me right now. Okay, so I'll have to first download it, or maybe another thing that can be done that we'll talk about tomorrow. पेपर को ऐड करने के और क्या तरीके हैं. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, मैंने ये पेपर अभी डाउनलोड किया था. ऑल राइट, सो मैंने उस पर डबल क्लिक किया, ठीक है, उस पेपर पर, और वो पेपर खुल गया. डिजिटल नजिंग विद समथिंग समथिंग, राइट, दिस इज द पेपर, राइट. तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस पेपर को ऑनलाइन वर्जन में पढ़ सकती हूँ, ठीक है. ये अगेन सिंक साथ साथ हो रहा है, कोई भी चेंजेस करूंगी वो साथ साथ सिंक हो जाएगा, ओके, क्योंकि ऑनलाइन वर्जन है. अब सपोज मेरे को कुछ भी पढ़ना है, एंड इफ आई वांट टू दिस पर्टिकुलर थिंग आई वांट टू डू, आई वांट टू से हाईलाइट दिस. कुछ भी हाईलाइट करना है, जैसे हमारे पास नॉर्मल व्हेन वी रीड, सो वी कैन हाईलाइट थिंग्स, right? Color we can choose, so if I can choose the color of my highlight also from here, ठीक है. So for different aspects I can do different things, right? Now then उसके बाद when I'm reading I want to add some note. For example, मैंने कुछ lines पढ़ी in the middle of the paper and it reminded me of something that okay, अच्छा हाँ, इससे related क्या मैं अपने area में कुछ ऐसा use कर सकती हूँ, because when we read a paper hard copy wise, not digitally, we make notes, right? We simultaneously we make notes in our notebook, right? And I think we being the generation which has grown up with the non-digital tools, those days are gone, but somehow it is very important, and it is somewhat very essential for us to somehow jot down certain essential points, right? And of course, we can't, if we are reading, say, 200, 500 papers, we can't remember anything, after a point of time. So we'll have, to that, sticky note comes really handy. It helps to annotate. For example, I checked on this, and then here, there is a sticky note. I can add a comment. I can add a comment that, say, read it later, or read more, or say discuss with supervisor, right? So these are the things that I need to know, that okay, all right, I have to discuss this with my supervisor. Now I click it, ये मेरा यहाँ पर annotation दिख रहा है, right? ये options हो गए तीनों. अब उसके बाद ये वाला, this is like fit to width, जितना भी width of the screen है उस पे मेरे को fit करना है to have a more comfortable reading experience. This is zoom, right? And this is zoom out, normal stuff, right? And this is again turning it around, right? This is the download the paper, that if I want to download it on my desktop. This is again search option, very relevant. अगर मुझे इस PDF में suppose कुछ search करना है, जैसे कि इसका जो main word है nudge. See, it is appearing 75 times. So nudge, nudge, nudge. So if I want to search for a particular keyword, here it is. Okay, I hope that is clear. So जब हम एक पेपर पढ़ रहे हैं, please understand that I am reading a paper, right? So when I'm reading a paper, these are the tools that are very handy for me to read it online. Okay, now info, again, info is there. One thing I want to say is that information I showed you, this is the annotations. Ab suppose मैंने, as I said, for example, I have a very weak memory. I can't remember anything after say 15 days. I don't remember majority of the things that I have read. I remember just the major points, but I don't remember the nitty-gritties. For that, this is very handy. For example, I annotated this. मैंने एक note बनाया था. इस पर्टिकुलर PDF में जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं वो कमेंट्स मेरे ऐसे आ जाएंगे, राइट? सो इफ आई वांट टू सी, अच्छा ये कमेंट कहाँ था, एंड दिस विल बी देयर, इट विल ऑटोमेटिकली शो हियर. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, नाउ देन टॉकिंग अबाउट नोटबुक, दिस इज अ प्रॉपर नोटबुक. यहाँ पे तो मैंने कमेंट ऐड किए थे एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम डॉक्यूमेंट के अंदर, बट ये बेसिकली नोटबुक है, राइट? सो आई कैन हैव, say, since it's empty, I'll create a first page of the notebook, write my title,
ठीक है, and in that notebook I can write my thoughts. ठीक है, suppose I'm reading papers and I want to write my thoughts around it, then I can use this notebook option. और ये notebook option आपका यहाँ पर भी आता है already, left hand side पे यहाँ पर भी it is available, this option. ठीक है, I hope my pace is fine and you are able to understand this. Okay. Okay. Now अभी मेरा already आप देख सकते हैं यहाँ पर already this paper is open. ठीक है. I want to read something else also. So Mendeley gives you that liberty that आप simultaneously बहुत सारे पेपर पढ़ सकते हैं. For example, मैंने दूसरे किसी पेपर पे भी क्लिक किया, this paper will also open. So जैसे हम simultaneously, क्योंकि as a researcher we are used to reading so many papers simultaneously. You know, it's not just one paper that we have to refer. कभी हमें once with practice we will know कि कौन से पेपर्स का कौन सा एस्पेक्ट रेलेवेंट लग रहा है, तो आई बॉल करते 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 चलेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम एनोटेट कर देंगे, तो उससे इट विल बी वेरी हेल्पफुल. सो सपोज ये दोनों पेपर साथ में खुले हैं, मैं एक और कोई पेपर खोलना चाहती हूँ, सो सपोज यहाँ पर, तो आई कैन, इट इज लाइक द टैब ऑन योर क्रोम और फायरफॉक्स. ठीक है, तो वो टैब्स अलग अलग टैब्स मेरे खुल गए हैं एंड आई कैन एक्सेस दिस पेपर. हालांकि a lot of this experience I want to say depends on the speed of your internet also. Okay, now fine, so this is important and we are done with this particular part. Let's go to the library again. Okay, and let me tell you what all can be there. अब मैंने एक आपको ऑप्शन बताया था कि ये पेपर है, जब मैंने पेपर पढ़ना चाहा उसमें एक ऑप्शन था, दिस इज द पेपर एंड दिस इज द सर्च ऑप्शन. तो ये सर्च ऑप्शन फाइंड इन द पीडीएफ था, मतलब पीडीएफ के अंदर मैं क्या सर्च कर सकती हूँ. ओके, बट लेकिन व्हेन आई गो टू माय लाइब्रेरी, मेंडले का ये मुझे, मेरे लिए पर्सनली दिस इज द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ सर्च. समथिंग वेरी बेसिक, वेरी वेरी इजी, बट व्हाट इट डज इज दैट व्हेनेवर सपोज आपका जो ट्रेडिशनल तरीके से जब आप एक अपने डेस्कटॉप में कोई भी पेपर ऐड करते हैं, ठीक है, फोल्डर में, तो जब आप सर्च करते हैं कोई भी टर्म, तो वो पेपर का टाइटल सर्च होता है. सपोज मैंने पेपर डिजिटल नजिंग किया, तो जब मैं अपने सपोज अपने सिस्टम में सर्च करती हूँ, जब सर्च का ऑप्शन होता है, जब इसमें विंडोज में उसमें हम करते हैं, या फिर मैक पे जब हम स्पॉटलाइट ऑप्शन चूज करके सर्च करते हैं कीवर्ड में डिजिटल करूंगी, तो वो पेपर का नाम जो है वो आएगा और वो पेपर डॉक्यूमेंट खुलेगा, राइट. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो सर्च ऑप्शन है उसमें कुछ भी खुल सकता है. जहां पर भी वो वर्ड आएगा, चाहे वो टाइटल में हो, चाहे वो ऑथर नेम में हो, और बी इट इन टर्म विद इन पेपर, ठीक है, दैट पर्टिकुलर वर्ड विल बी caught, right? So that is the beauty of it. Okay. Yes, some of you are writing that yes, it is available on YouTube. There are tutorials on YouTube, but I am really hopeful, and I assume that once you go through all of this today and tomorrow, it will be very clear. And especially the PDFs also, I have tried to make it as clear as possible. So I would really highly recommend, if you just, all of you, please be very concentrate here. And I think it'll be you'll be able to understand it well. Okay, so all references recently added, we've understood. This is recently read. So for example, whatever papers जो मैंने open किए थे, Mendeley is taking into consideration. For example, when you have papers on your desktop, you don't remember कि आपने last paper कौन सा पढ़ा था. Like last 3 दिन पहले कौन से papers पढ़े हैं. So, but this will give you a very easy idea, easy access to all the papers that you have read recently, right? Again, there is favorites option. जैसे हम favorites करते हैं, for example, अगर मैंने recently read है and I liked this paper and I thought, oh, अच्छा नहीं, मुझे इसमें दोबारा I have to go through this paper. Let me favorite it now. And maybe, discuss it later, read it later, or for any other reason I can favorite it, right? Every researcher will have their own reasons to favorite a paper, right? Or that I have to say access it sooner or later, or maybe it is somewhat very related to what I'm thinking right now.
whatever could be the reason. So that this particular aspect helps, this star helps you to favorite it, right? So this is my favorites option. Okay, so when I do the favorite, this paper digital nudging, because मैंने star को tick किया था, so it has come here like that. Okay, now this is my publications. Now basically this is my publications means these are the papers that I have that are published by me, right? I am the author of these papers, so these are my publications. Because generally when you write a paper, you can also cite yourself, not a lot, because that also leads to a lot of plagiarism, but you can still cite your paper, and for that, here also this can be a good tool to keep a track of that. Okay, citations हम कल discuss करेंगे, इसीलिए I'm not talking a lot about it. Okay, now this is trash. Now for trash, what happens? For example, there is some paper that I want to really, eliminate. So maybe I want to say eliminate this particular paper, right? So I can just simply, just delete it using the delete key, or I can just simply delete it. Like I can check it. Okay, I can then go to delete and I can delete it here. Then suppose if I delete it, okay, I've deleted it. Let me see. Then it will come in my trash. Simple, right? This is come into my trash. And if I want to suppose delete it permanently, then I can do this. Or if I want to restore that, I want to send it back to where it was, then I can restore it. Okay, now all the references. So again, this paper has come here, which I had deleted. I hope that is clear. Okay, now very important thing is collections. Now what are collections basically? Collections are basically folders. These are the folders. For example, दो folders हमें आदत है बनाने की अपने desktop पे या अपने computer पे हम folder बनाते हैं. अच्छा ठीक है, experimental study का idea है तो उसको हम एक अलग folder बनाएंगे. ठीक है, एक कंस्ट्रक्ट के बारे में बहुत सारे पेपर्स है, सपोज 50 पेपर्स है, उस कंस्ट्रक्ट को सपोज लेके मैं एक फोल्डर अलग बनाऊंगी. अब वो उसकी वजह से इतने फोल्डर्स बन जाते हैं दैट वी गेट कंफ्यूज्ड, राइट? हियर यू कैन हैव एक्सेस टू ऑल द फोल्डर्स लाइक दैट. उसका आइडिया इज दिस कि डिफरेंट डिफरेंट आप फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो, कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो, राइट? कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, this you go here, new collection, right? This is your, you can type, say, new idea. Okay, so this is my new idea, right? All right. Okay, so new idea is created. So I just fill this in and I pressed enter. ठीक है, तो न्यू आइडिया एक फोल्डर बन गया. अभी उस फोल्डर में कुछ भी नहीं है. ठीक है, so no references in this collection. Drag and drop PDFs here to add references. Now new idea में suppose मैं चाहती हूँ I want all my references to be there, right? Now when I want, suppose ये डिजिटल नजिंग वाला पेपर ही मुझे न्यू आइडिया में डालना है. ठीक है, सो लेट मी गो थ्रू दैट. ऑल रेफरेंसेस, ये मेरा पेपर था, राइट? वेयर इज द न्यू आइडिया? हियर. दिस इज माय पेपर. आई जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप इट, राइट? मैं न्यू आइडिया के ऊपर इसको ड्रैग किया एंड नाउ आई एम ड्रॉपिंग इट and you can see something is happening, sync हो रहा है, right? So new idea when I went, it is here. ठीक है, डिजिटल नजिंग. तो मेरा न्यू आइडिया वाले फोल्डर में डिजिटल नजिंग अपने आप ऐड हो गया. सिमिलरली आई कैन ऐड मल्टीपल रेफरेंसेस यूजिंग, आई कैन सेलेक्ट देम, राइट? नाउ आई कैन also do this. Okay, now I can multiple मेरे references है. I can go to organize, add to collection. I want to save which collection. I want to go for new idea. ठीक है, and add. If you want, you can add it to the multiple folders also. दो ideas अगर coincide कर रहे हैं,
ये सपोज मेरे एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए भी काम आ रहा है और मेरा न्यू आइडिया में भी काम आ रहा है, तो मैं दोनों में ऐड कर सकती हूँ. आई होप दैट इज क्लियर. तो लेट्स चेक. न्यू आइडिया में अब मेरे 3 पेपर्स हो गए हैं. ओके, so this is like creating folders but in a more organized manner, right? Okay, now this is the whole idea. And now next thing that I want to talk about is groups. अब ग्रुप्स क्या है, जनरली क्या होता है जब हम किसी एक पेपर पे काम करते हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. एक से ज्यादा हमारे ऑथर्स होते हैं जनरली, ठीक है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सी दैट सपोज आई वांट टू क्रिएट अ ग्रुप, ठीक है, एंड आई वांट टू शेयर द कंटेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मुझे आइडिया अपने शेयर करने हैं अपने फेलो ऑथर्स के साथ. तो आई विल मेक अ ग्रुप. ओके, सो प्राइवेट ग्रुप. चलो अब फॉर एग्जांपल न्यू ग्रुप बनाने के लिए भी यहाँ पे आ गया न्यू ग्रुप. ओके, नाउ न्यू ग्रुप बन गया. नाउ आई वेंट टू द न्यू ग्रुप, right? So I can do what? I can add papers here, and I can see and see who all can be a part of this group. This I will show you once we have the Mendeley desktop also. Okay, so just be with me here. But these are the groups that have been created to further elicit to have a collaboration with other authors also. I can invite authors and I can make a group like that. Okay, usme I will come to that also. Now let me go to my Mendeley. Excuse me, Shrishti ma'am. Yes. Ma'am, there is lots of question in our chat box. Ma'am, please इन्हें हम पहले clear कर लेते हैं. Okay. Okay, but ma'am. I think the Ma'am. only I mean the only problem is that we'll run out of time maybe. Let's see. Okay, fine. Okay, No ma'am. question I'll take now. It's okay. Ma'am, it is required for writing research paper or thesis. It is required. Yes, it is required for both actually. It is required for both. Whenever you write anything, be it a report, be it anything, it will be needed. Okay. Ma'am, one participant asked DOL details. Can you repeat? DOI. It's DOI. DOI बेसिकली एक डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है. जब आपका एक पेपर होता है तो उसमें बेसिकली जब भी आप किसी जर्नल के साथ व्हेन यू गेट योरसेल्फ पब्लिश्ड, द जर्नल एक्चुअली इशूज यू अ DOI फॉर द पेपर. तो अगर वो DOI आप कहीं पे भी सर्च करेंगे, बिकॉज कई बार होता है ऑथर नेम सिमिलर हो सकते हैं, titles can be somewhat similar, anything can be there, but DOI of a paper will always be different. Every paper will have a different DOI, so you can search using the DOI. वो आपके पेपर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है. और बिब्लियोग्राफी में DOI यूज होता है. जब आप बिब्लियोग्राफी जनरेट करते हैं तो DOI मेंशन किया होता है, इसीलिए. Okay. I hope that is clear. Ma'am, it is an online process or app? Or Application. For Mendeley or DOI? Ma'am, Mendeley. Mendeley, yes. Mendeley is actually both online and offline. Offline, I'll talk about it in the coming next 10 minutes. I'll talk about offline. That is why I have been mentioning online again and again. So this is the online version, right? Mendeley web. Offline version is Mendeley desktop. Okay. Okay, ma'am, one more question is here. Ma'am, can you please repeat how to search any paper available online with help of keywords or small statements? Okay, so basically I'm on this Mendeley web, right? I am on the Mendeley web homepage, and if I have to search for articles, then I can suppose whatever your area is, suppose digital marketing, is that? So it could be used as a keyword, right? And then I can have papers here, state of digital marketing in academia, digital marketing capabilities, gap, and so on and so forth. So you can search using this. You can search using any keyword, anything of that sort. Okay. I hope that is clear.
Because ये हम Mendeley की बात कर रहे हैं. As I said, when you search in Google Scholar, you will have more journals, more publishing houses. Here it is basically, since it's a product of Elsevier, तो Elsevier के अंडर जितनी journals आएंगे वो यहाँ पर available होंगे. Okay. Ma'am, how to remember key points? How to remember keywords? कीवर्ड्स आपको हिट एंड ट्रायल से डालने पड़ेंगे. जब अगर कभी आप कोई पेपर भी पढ़ते हैं, सो उस पेपर में भी अपने कीवर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जो मैंने डिजिटल नजिंग वाला अभी पेपर किया था, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू. जो हमने डिजिटल नजिंग का पेपर किया था अभी, उसको मैं खोलती हूँ, या कोई दूसरा पेपर खोलती हूँ. एक सेकेंड. See, यहाँ पर लाइब्रेरी का फायदा ये है that whenever you access it, these papers will already be opened, so that will help you. Okay. Coming to that, because for every journal the situation is different. In a lot of journals, जब आपका abstract होता है ना, उसी के नीचे यहाँ पे keywords लिखे होते हैं. ये रहे, here they are in the abstract, क्योंकि abstract का एक फॉर्मेट होता है, जैसे बैकग्राउंड, मेथड, रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स, राइट. यहाँ पर कीवर्ड्स हैं कोविड-19, हेल्थ बिलीफ मॉडल, फेटलिज्म, प्रिवेंटिव बिहेवियर, ईरान, राइट. तो यानी कि ईरान की स्टडी है टॉकिंग अबाउट प्रिवेंटिव बिहेवियर, ये सारे उसने मॉडल्स या थ्योरीज यूज किए हैं और ये कोविड-19 के बारे में है. तो वो आपको अपने आप जैसे जैसे आप पेपर्स पढ़ेंगे अपने एरिया से रिलेटेड, आपको अपने कीवर्ड्स भी अच्छे से और क्लियर होंगे. एंड कीवर्ड्स रियली हेल्प यू टू सर्च वेल, राइट. I hope that is clear. Okay. Whenever you read a paper, there'll be keywords in this. So you can determine your area ka keyword based on this. Okay. Okay, thank you, ma'am. Okay. Okay, you So can continue. Thank you, ma'am. let's just move on to the next part. That is here, groups. So I was talking about the groups, right? So suppose this was the group. Financial literacy was a group here, right? Now this is a group, and I can add a picture here. I am the group admin here. जैसे WhatsApp पे कोई group होता है, right? So you can also invite members. Now if I say invite member, I have to write their email ID, and I have to just invite them in order to join the group, right? So members आ जाएंगे यहाँ पे. अगर if I want to share the document, क्योंकि अगर वो जिनको मैं इनवाइट करूंगी अगर उनका भी मेंडली अकाउंट है, only then this will be a collaborative thing. ठीक है. That means for example अगर मैं WhatsApp group बना रही हूँ, for example very very basic example, that all of the members should have WhatsApp installed on their phone, right? Then only they can be a part of WhatsApp group. Similarly, if they have a Mendeley account on web account, right, then they can certainly be a part of this. Okay. Now documents I can upload, or जो भी group के members होंगे, any one of them can actually upload documents. So it is a collaborative effort, right? अगर बहुत सारे co-authors होते हैं जैसे, तो उसके हिसाब से we can work, right? They just have to log into their accounts, and they'll also, for them, this private group, they'll also be a part of the group, and उनके Mendeley web version में भी और desktop में भी rather, दोनों versions में group आ जाएगा. So they can always post new ideas into the group. I hope that is clear. Okay. Yeah, so I would like to ask you, Dr. Shrestri, one very interesting, because you're explaining something very useful when it comes to this, group formation. Yes, am I audible to you? Yes, ma'am. Yes. Yeah. So are these documents which we are going to share should be in PDF only? Because many times we do data collection and all, and we are working on different variables and constructs and different dimensions of that, applying different statistical methodologies. So Yes, ma'am. will we be able to share only the PDF documents, or Excel or other formats can also be accessible in this? Ma'am, basically that is one of the, I would say, the shortcomings here, that Mendeley only accepts PDFs. This is there. So only PDF files can be uploaded in the document format. So that is something. Okay. So let's move on to, now we've done search, we've done groups, I have explained about the library, right? Let's do
let's talk a little bit about the profile, right? Settings and privacy. I went to my profile. So this is my profile picture, right? Now these are the personal details that you can add, right? All of this you can add. Now password also you can change from here. Now also it is important, it is good to actually describe your area, right? Because since it's a profile, you can describe your area. Next important thing that I want to talk about is a Scopus profile. Yes, ma'am. Just give a pause on that area, because here in lot of students are of a different area, so that they can have a glance what all areas are looking here. There are a lot of questions on that, so if you can give a pause on that. Okay, sure, ma'am, sure. Yeah. So as you can see, agriculture, biological sciences, arts, humanity, chemistry, computer science, decision sciences, very relevant in today's time. Earth, planetary sciences, economics, econometrics, energy, right? And then there is so many of them: pharma, philosophy, social sciences, veterinary, sports and recreation. Actually, all of these, obviously there are areas beyond this also, but these are the broad areas, right? And something which is basically in the purview of Elsevier, right? Because at the end of the day, Mendeley is an Elsevier product, right? Elsevier is the parent company. तो यहाँ पे हम अलग अलग areas choose कर सकते हैं, right? Okay. So for example, I had chosen economics and econometrics and finance. Okay. The next thing which is important here is the Scopus profile. Now, what is a Scopus profile? I hope, you can respond to this. How many of you have a Scopus profile? Like you have logged on to a Scopus, you have made an account, and you have a Scopus ID. How many of you have that? I have that, I think. Okay. So Sangeeta ma'am has that. So I hope, since I can't hear a lot of yes, that means a lot of you do not have it. So I would really urge you to have a Scopus ID, because at the end of the day, Scopus and Mendeley both are Elsevier's product. So if you have a Scopus ID, it not just helps to really identify a lot of your work. अगर आपका work Scopus Index Journal में publish होता है, तो वो easily identifiable भी होगा, Scopus ID आपके पास होगा, and वो Mendeley से automatically sync होगा. तो जब आपका कोई भी Scopus कि किसी इंडेक्स जर्नल में आपका पेपर पब्लिश होगा, तो आपको खुद नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली आपके माय पब्लिकेशंस का फोल्डर था लाइब्रेरी में, जहां पे मैंने कहा था कि हम अपनी पब्लिकेशंस डाल सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा. सो ऑटोमेटिकली इफ यू हैव अ स्कोपस आईडी, all your papers which are published in Scopus Index journals, they'll automatically, as a repository, it automatically sends it to a to your Mendeley profile, Mendeley under my publications. Okay. Otherwise also it's a good practice to have Scopus ID or ORC ID, अगर आपने सुना हो, एक ORC ID. So I would really request all of you can go and check out ORC ID के बारे में भी, because as researchers it is important for us. These are the basic practices. Generally जो good quality journals है, they ask for these IDs also. Okay. Now subscription, this is not needed because subscription, just a second. Subscription is the personal space. I said 2 GB तक is allowed, but 2 GB के बाद आपको paid subscription होता है, so that can also be done. Okay. Now talking about notifications. See, notifications बहुत मुझे particularly बहुत interesting लगता है, and I have subscribed it. As you see, notifications के अंदर suppose suggestions of articles to read weekly. अब मेरे Gmail अकाउंट से, क्योंकि मैंने कनेक्ट किया हुआ है, जो भी आप अकाउंट का ईमेल आईडी से Mendeley को लॉग इन करेंगे, those articles, new article, any new work that has happened in your area, right, वो आपको suggestions आएंगे. ठीक है. So suggestion of articles to read weekly based on the area that you have defined. ठीक है.
Now, this is very important, and I get weekly, suggestions from Mendeley. So what happens is generally हमें याद नहीं होता कि we every week we are not able to really update ourselves, on our own. So if we get weekly updates, it's very useful. Okay, so I hope this is clear. Because now as the time, it's 3:42. All right. So let's go to, I have covered, this is the Mendeley web. I have covered search, groups, library, and the profile. Okay. Now, what I can do is, I know that a lot of you have questions. What I would really suggest is that today you go back, you see all this, because I will share the PPT with you. PPT has all the steps that you have to do this, right? Try to explore it on your own. And tomorrow, before starting the session, I can take the questions. I hope that will be useful. Okay. Now, talking about the next thing, let's just talk about a very important aspect, which okay, so this was the Mendeley web. I would really urge you all to please, now that these terms are relatively little new, you can also, okay, how to create Scopus ID. You can log on to scopus.com, again, create an, again, make an account there and see. Everything is available online. You can just see it. Okay. So somebody is saying, ma'am, if you're downloading, then let me see. Okay. If you're doing it simultaneously, good, but I would still say that instead you better listen, because I think downloading it simultaneously and doing it, if you can do it, fine, but I would really request to kind of do it. I mean, listen to it first and then you can do it later. Okay, anyhow, so talking about the second part, which is Mendeley desktop, right? What is Mendeley desktop? Abhi tak we have talked about Mendeley web. Mendeley desktop is the downloaded part of the software which is actually installed onto your computer. It is like MS Word, it is like Excel. ये आपकी लैपटॉप पे ऑनलाइन वर्जन की जगह ये आपका ऑफलाइन वर्जन है, ठीक है? That is why I was really constantly repeating online and offline. अब ये क्या करता है? First of all, ये as you can see the picture here, ये बेसिकली आपका डेस्कटॉप, वेब और इवन मोबाइल एप्लीकेशन, किसी टैब पे या मोबाइल फोन पर भी आप मेंडले की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? सो ये आपका जो ये वाले जो तीनों चीजें इनको सिंक करता है. तो डेस्कटॉप इज योर ऑफलाइन, जब आपके पास सपोज इंटरनेट कनेक्शन उतना रेडिली अवेलेबल नहीं है, या यू जस्ट वांट टू स्क्रॉल थ्रू पेपर्स एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? एंड वेब, and then there is mobile app, right? Mobile is also an app. It is an online thing. This is online, but this can be online and offline both. How? I'll tell you. But majorly this is offline. ठीक है? But तीनों को सिंक करने का ऑप्शन होता है. जैसे हमने मेंडले वेब पर देखा कि सिंक का बटन था, ऐसे ही डेस्कटॉप में भी सिंक का ऑप्शन है. So what happens? अगर if you are making changes in web, तो वो ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप में नहीं आएंगे. जब आप अपने डेस्कटॉप की ऐप खोलेंगे और उसमें सिंक करेंगे, तो वो जो क्लाउड सर्वर पे जितना भी आपका कंटेंट है वेब पर, वो आपका सिंक हो जाएगा, ठीक है? वेब में तो आपने देखा कि ऑटोमेटिकली सारा कंटेंट खुद सिंक हो रहा था, आपको सिंक खुद करने की जरूरत नहीं थी. ऑटोमेटिकली यूज्ड टू दैट आइकन यूज्ड टू सर्कल अराउंड एंड देन इट यूज्ड टू बी देयर यूज्ड टू बी अ टिक. दैट मींस वो ऑटो सिंक का ऑप्शन था. यहाँ पर आपको खुद डेलिबरेटली सिंक करना पड़ेगा. विल सी व्हाट इट इज, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट फीचर्स में अगेन, जो आपने मेंडले लाइब्रेरी देखा अपना वेब वाला वर्जन, ऑनलाइन वर्जन, ये उसी का सिमिलर सेंस में आपका ऑफलाइन वर्जन है. ऑलराइट, नाउ यू कैन ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स, यू कैन रीड, हाईलाइट, एनोटेट, find and import new content, you can sync also. Okay, now you can do all of that. Now when I said that I have given, like I have tried to make sure that you have a very clear picture of what is going on, then I have shared, you go to the same Mendeley web, right? This picture is Mendeley web. यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन था, ट्राई द डेस्कटॉप ऐप टू मैनेज योर लाइब्रेरी, डाउनलोड Mendeley रेफरेंस मैनेजर. जब आप इस लिंक पर जाएंगे,
दैट इज वाई पीपीटी में मैंने इसको हाईलाइट भी किया है. व्हेन यू गो टू दिस लिंक, दिस विल ओपन, यू विल गो टू दिस विंडो, और जब ये विंडो खुलेगी तो इसमें आएगा डाउनलोड मेंडली डेस्कटॉप फॉर विंडोज, राइट. अगर आपका मैक है तो आपका एप्पल ऐप है, मैक iOS है, तो मेंडली डेस्कटॉप फॉर मैक. लाइनेक्स करके भी इस वाले ओएस पे भी होता है, पर जनरली वी हैव विंडोज एंड मैक, राइट. सो आप विंडोज पे जाएंगे, अगर आपके पास विंडोज है तो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, तो आपके पास ये 3 ऑप्शंस आएंगे. जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, सपोज अगर आपको स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जैसे आर है या SPSS है, जब आप वो एक्चुअली इंस्टॉल करते हो तो वो पूरा प्रोसेस होता है. यू क्लिक ऑन आई अग्री एंड देन देयर इज इंस्टॉल बटन. सेम थिंग विल कम when you go to this, there will be installation, right? It will install. Once it will install, it will like I have shown here, open file, then you have to run it and Mendeley desktop will open. ठीक है, कोई ना कोई आपका, जब आप एप्लीकेशंस में जाएंगे तो Mendeley desktop का आइकन आपको दिखेगा. आप आइकन का शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पे बना सकते हैं, राइट. यू कैन पिन इट टू द टास्क बार. I'll tell you what I'm saying, okay? Now उसके बाद जब आप उसको फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो आपको साइन इन करना पड़ेगा. और नॉट जस्ट फर्स्ट टाइम, जब भी आप अपना नया, सपोज आप नया सेशन ऑन कर रहे हैं तो आपको लॉग इन करना है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस लॉग इन के लिए आपको इंटरनेट चाहिए. बिना इंटरनेट के आप लॉग इन नहीं कर सकते. इट रिक्वायर्स इंटरनेट. सो दिस इज पिक्यूलियर, अ लिटिल पिक्यूलियर. कि ऑफलाइन वर्जन है लेकिन लॉग इन करने के लिए यू नीड इंटरनेट. ओके, so email ID and password, this has to be the same for what you have used for Mendeley Web. So I highly recommend that it should not be different. Web का और desktop का दोनों का email ID और password same होना चाहिए. And for the sake of convenience, write it down somewhere so that you never forget it. Or otherwise, even if you forget it, there's always a forget password option on the web. आप password reset कर सकते हो. And again, the same thing you can, just like any other application जिसमें ऐसे होता है, right? Okay. So this is about downloading the Mendeley desktop, right? Okay. Now, Mendeley desktop के अपने अलग, aspects हैं. जैसे you can add files, there are folders, exactly like collections folders जो अभी web पे देखा था, वैसे you have folders, you have sync, जो कि आपको मैनुअली करना पड़ेगा. ऑटो सिंक ऑप्शन इसमें नहीं है, मैनुअली खुद करना पड़ेगा, अपने आप सिंक नहीं होगा. ग्रुप्स है, डिटेल्स पैनल है, ठीक है, ये सब हम बात करेंगे. सो दिस एग्जैक्टली इज योर Mendeley डेस्कटॉप, ऐसा दिखता है. ओके, नाउ फिर उसके बाद ये सब चीजें मैं आपको जल्दी से गो थ्रू कर देती हूँ बिकॉज फिर हम हैंड्स ऑन करेंगे. सो व्हाई एम आई सेइंग इट, जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप खुद करेंगे इसको तो आपको वंस यू सी द पीपीटी तो आई डोंट थिंक आपको इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए. अगर है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कल हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो इसमें बेसिकली क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल राइट हैंड साइड पैनल है जिसमें कि लिटरेचर सर्च है. अब Mendeley के अंदर डेस्कटॉप वर्जन के अंदर भी सर्च आता है, ठीक है, और ये सर्च अगेन ऑनलाइन हो गए तो आपका सर्च होगा, राइट. तो जैसे Mendeley वेब में आप सर्च कर सकते थे आर्टिकल्स, आप इसमें भी कर सकते हो. बट इसमें कहीं ना कहीं सर्च का ऑप्शन फिर अगेन एल्जेवियर तक लिमिटेड है. प्लस समटाइम्स जब आप इस पे सर्च करते हो तो बिब्लियोग्राफी आपकी पूरी करेक्ट, एक एक इंफॉर्मेशन उसकी करेक्ट होगी या नहीं, दैट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट. ओके, सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कंफर्म, राइट. So that is one thing. Then all documents recently added, recently read, favorites, ठीक है. नीड्स रिव्यू, इसके बारे में बात करेंगे. मतलब क्या पता इसकी बिब्लियोग्राफी या इसके किसी कंटेंट में Mendeley ने जब इसको हमने कोई भी डॉक्यूमेंट इंपोर्ट किया तो वो सही तरह से इंपोर्ट नहीं हुआ, राइट. तो वो डिटेल नहीं अच्छे से इंपोर्ट हुई तो अपने आप ही नीड्स रिव्यू के अंडर कुछ पेपर्स आ जाएंगे, तो वो हमें मतलब इट रिक्वायर्स रिव्यू. ओके, देन माय पब्लिकेशन, सेम थिंग जो हमने अभी ऑनलाइन वर्जन में किया. हमारे जो मेरे ऑथर किए हुए या आपके ऑथर किए हुए जो पर्टिकुलरली पेपर्स होंगे वो आपके Mendeley डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और Mendeley वेब में भी आ जाएंगे, ठीक है. नाउ अनसॉर्टेड क्या होता है? अनसॉर्टेड वो होते हैं पेपर्स, जो पेपर्स हमने किसी भी फोल्डर में नहीं डाले. वो ऑल डॉक्यूमेंट्स में तो है, पर जब हमने यहाँ पे भी हमने फोल्डर्स क्रिएट किए, सपोज जब जैसे मैंने न्यू आइडियाज का फोल्डर क्रिएट किया था तो मैंने 3 पेपर्स उसमें डाल दिए थे.
ऐसे ही यहाँ पर सपोज फोल्डर्स आई हैव क्रिएटेड, बट कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो जो किसी फोल्डर का पार्ट नहीं है, तो वो अनसॉर्टेड में आएंगे, राइट। सिमिलरली फेवरेट्स आपको हमने अभी डिस्कस किया था, फेवरेट हम कर सकते हैं यूजिंग द स्टार। जहाँ पे ग्रीन डॉट ये थोड़ा बड़ा होगा मतलब अनरेड, ये थोड़ा ऐसे छोटा सा होगा ये तो मतलब रेड, ठीक है। दीज आर द बेसिक फंक्शंस। नाउ फिर आता है फोल्डर्स। फोल्डर्स की बात कर सकते हैं, क्रिएट फोल्डर, वहां पे जैसे क्रिएट कलेक्शन था, यहाँ पे क्रिएट फोल्डर है, ठीक है। ये फोल्डर्स ऐसे बन सकते हैं आराम से, हमने जो अभी बनाए थे, राइट। यू कैन ड्रैग ड्रॉप करके आप अपनी रेफरेंसेस फोल्डर्स के अंदर डाल सकते हो। everything is just the same, so that is because otherwise if the interface is very different then the user will have some difficulty, right? but यहाँ पे ऐसा नहीं है, web और desktop version pretty much same है, right? okay, search your documents in Mendeley desktop। similarly आप search कर सकते हो, ठीक है। search का ऑप्शन अभी हम चेक करेंगे, right? okay, now filter using tags। मैंने आपको tags बोला था, टैग्स मतलब वही जो कीवर्ड्स हैं जो आपने दिए हैं। एक होता है कीवर्ड्स जो उसने इंपोर्ट किए हैं, कोई भी पीडीएफ आपने इंपोर्ट किया, ऐड किया अपने लाइब्रेरी में, और वो ऑटोमेटिकली कीवर्ड इंपोर्ट हो गए। लेकिन टैग्स वो हैं जो आपने कीवर्ड्स दिए अपनी रिमेम्बरेंस के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, ओके। चेक फॉर डुप्लीकेट्स, ये एक अच्छा टूल है, अभी हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल होता है बहुत बार कि हमने सपोज एक पेपर अलग अलग जगह हमें मिला, क्योंकि कोई भी पेपर बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर होगा, वो आपको मेजरली ज्यादातर हर अलग अलग टाइम पर वो दिखता रहेगा। व्हेन यू सी अ पेपर एंड यू हैव एडेड अ पेपर सपोज ट्वाइस थ्राइस लाइक दैट, तो जनरली मेंडले आपको वो ऑप्शन देता है कि आप डुप्लीकेसी चेक कर सकते हो। तो टूल्स के अंदर आप डुप्लीकेट्स पे जाके यू विल सी दैट द पेपर्स कैन बी चेक्ड, ठीक है। ये हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से करेंगे। अभी आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ, राइट, सो दैट व्हेन वी डिस्कस इट ट्वाइस इट विल बी ऑल द मोर क्लियर। yes, tags are made by us. Kindly share this ppt so that we can access properly. Okay, I will share the ppt after the session. Not able to see search option in desktop version. Let me come to that, sir. एक बार मैं पहले let me complete this first. Okay. Now, again, the very basic thing that once I double click on any of the PDF, तो PDF खुल जाएगा, और PDF में मैं सेम जो पहले मैं सपोज रीड, हाईलाइट, एनोटेट कर सकती थी, वो सेम चीजें मैं इसमें कर सकती हूँ। हाउ, आई विल शो यू। ओके, नाउ ये एक अनदर ऑप्शन है इसका। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि वेब वर्जन में सिर्फ 2 GB अवेलेबल होता है स्पेस। तो जनरली क्या होता है कि नॉट ऑल पेपर्स इज समथिंग दैट यू नीड ऑन योर मेंडले वेब, ठीक है। डेस्कटॉप पे आप रख सकते हो, पर आपको सारे पेपर्स मेंडले वेब पे नहीं चाहिए होते, ठीक है। तो आप एक ऑप्शन कर सकते हो, क्योंकि आप स्पेस बचाओगे अगर आप यू विल बी एबल टू सेव ऑन स्पेस इफ यू डू इट इन द if you don't upload all the papers PDFs, सिर्फ references. Again, please be very careful about two things. PDF is the hard copy, the soft copy of the paper. References is just the bibliographic details कि author, name of the journal, year, title, abstract, तो वो bibliographic details है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप यहाँ पर एक ऑप्शन होता है एडिट सेटिंग्स, एंड उस पर जाके जब आप ये वाला चेक बॉक्स होता है सिंक्रोनाइज अटैच्ड फाइल्स, इसको आप अनचेक करते हो, ठीक है। दिस इज अनचेक, सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे हो अटैच फाइल, यानी कि आपकी पीडीएफ्स जो है वो आपके वेब पे नहीं जाएंगी, राइट। ओनली रेफरेंसेस विल गो बट फाइल्स वोंट गो। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, नाउ समरी, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। ओके, लेट्स जस्ट गो टू I hope, okay, let me see. No, Mendeley is only available in English. It is not available in Hindi. Okay,
I hope my Mendeley desktop is visible now that I'm logging in with the same credentials. And for installation, I would suggest that you can also refer to the online, you can refer to the online resources. There's a lot of resources on, downloading Mendeley. So you can do that also. Okay, give me just a second. Can somebody confirm that if my Mendeley desktop is visible? Is it visible? Yes, yes, it is. Yeah. Okay, great. Um, Now, coming to the desktop, as all of you can see, it looks somewhat similar in terms of what all is there. Okay, excuse me, I'll just have water. Yeah, thank you. Okay, so coming to that, let's see first thing first. This is already my library has been created. Okay, now, okay. Now, what will I do is I will go to, suppose, file. I can add file. Okay, similar to what we used to do. Na? I can add file. Suppose again the same folder, Mendeley workshop. Now, last time I had included digital nudging. Now I can include something else. Before that, let me see. Can you see that this paper? I did not have this paper that I have highlighted. I did not have this paper earlier. This paper is at create. I did not log into my Mendeley desktop, but it has been synced, right? जब ये open होता है first time, then वो sync हो जाता है, right? So ये sync का option यहाँ पे है, right? So open हुआ and it gets synced. It does not get synced all every time. Like all through my session, I'll have to sync it manually, right? But here, now that when I logged in, it got, the syncing process happened. And this paper, which I added in the web version, is now, and मैंने इसको favorite भी किया था. So exact same sense में this paper has come, right? So recently added check करती हूँ मैं. So see, recently added में ये है. These are the papers that I was, I had recently added. Let me see. Is new ideas here? Yes, new idea is here. This folder has also come, right? So all of this I did on my web version, है but when I did the syncing, everything exactly has come on the desktop version also. So that is what I meant when I said that you can use the web and the desktop together, right? Desktop gives you that flexibility that you can do, you can do your work offline, whatever you want to do. You don't need internet, like you just need it for the login. उसके बाद आप अपना काम कर सकते हो, you can do all of that. And then once suppose when you want to have it online, then you can sync it and everything, all the changes exactly in the PDFs, whether you have created a folder, whether you have created a group or anything of that sort, it will automatically reflect in your Mendeley web. Okay, now up coming to the papers, like first see all documents. Now file, the best thing is, suppose you have a full-fledged folder, right? Suppose you don't want to you just don't have one PDF, you have a full entire folder that you want to download, right? So what I can do is, suppose I can use this folder was there that had both the papers. Let me see. All right, so suppose this is the folder, so I do okay. Now let me see. Now recently added, yes, something has been added. See, can you see? This is the paper at 4:01 p.m. This paper has also been added, and this was the paper that was already there. So there is no duplication showing here.
I talked about checking for duplicates. We will see duplicates because वो सेम पेपर उस फोल्डर में था. So जो ये सेकंड पेपर है ये मैंने पहले इंडिविजुअली वेब पर अपलोड किया, इसीलिए वो यहाँ पर दिखा. अब मैंने पूरा फोल्डर जिसमें ये सेकंड वाला भी था, फर्स्ट वाला भी था, दोनों पेपर थे, ये दो मैंने अपलोड किया और ये विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स my entire folder has been uploaded. So even if you have suppose 50 papers in one folder, अभी जैसे currently है, अभी current state है, आप Mendeley desktop डाउनलोड करोगे, आप चेक करोगे कि आपके पास कौन कौन से पेपर्स हैं. तो if you have a full folder, you import the folder, right? Go to file, add folder. Okay, now so add files easy. ये तो एक सिंगल पीडीएफ के लिए है. एड फोल्डर मतलब पूरा अगर आपको फोल्डर एज इट इज अपनी लाइब्रेरी में डालना है, ठीक है. नेक्स्ट वॉच फोल्डर, वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट डज वॉच फोल्डर डू? वॉच फोल्डर डज व्हाट? सपोज वॉच फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे फाइल में जाकर, कोई भी आप एक अपने डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पर आप कोई भी एक फोल्डर बना दीजिए किसी भी नाम से, ठीक है. मेंडले क्या करेगा, दैट पर्टिकुलर फोल्डर विल बी योर वॉच फोल्डर. उससे क्या होगा कि अगर आप कभी भी कोई भी पीडीएफ, सपोज कई बार हम सेटिंग कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, वो डाउनलोड करा हुआ पेपर आप डायरेक्टली वॉच फोल्डर में डाल दीजिए, जो आपने बनाया है. कोई भी फोल्डर हो सकता है, वो XYZ, सृष्टि, व्हाटएवर, किसी भी नाम से, ठीक है. वो आप यहाँ पर जाकर, अभी मैं बताती हूँ कैसे करना है, उसको वॉच फोल्डर असाइन कर देंगे. तो कभी भी जो भी पीडीएफ्स डलेंगे वॉच फोल्डर के अंदर, वो ऑटोमेटिकली मेंडले के लाइब्रेरी में रिफ्लेक्ट करेंगे. तो आपको खुद नहीं डालना, आपको एक वॉच फोल्डर आपने बना दिया, कभी भी आप वॉच फोल्डर के अंदर डालेंगे तो मेंडले में ऑटोमेटिकली आ जाएगा. सपोज आपको ये चाहिए कि मेरे को मेंडले के अलावा भी एक कलेक्शन चाहिए किसी चीज का, सपोज बिकॉज ऑफ वट एवर XYZ रीजन, ठीक है. इफ यू वॉन्ट देन यू कैन डू दिस ऑल्सो, कि वॉच फोल्डर बनाया, कोई भी पीडीएफ है वो वॉच फोल्डर में डाल दिया, अपने आप मेंडले उसको लेगा, ठीक है. नाउ मैंने क्या किया था कि मैंने डेस्कटॉप पे ना एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, वॉच फोल्डर सृष्टि, ठीक है. ये मैंने बनाया हुआ है एंड मैंने ओके कर दिया, ठीक है. नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन because I want to show you how it works. Share screen. Okay, watch folder. हाँ, ये मेरा वॉच फोल्डर है जो मेरा डेस्कटॉप पे था, इसको मैंने वॉच फोल्डर असाइन कर दिया. अब सपोज मैं एक I can go to any document. Suppose I go to, I just need one paper, right? Okay, I can do this. Suppose मैंने कोई भी पेपर ले लिया, सपोज अग्रवाल 2013 मैंने एक पेपर लिया, ठीक है. मैं ये पेपर व्हाट आई एम गोइंग टू डू 2013 और 2014 15, ठीक है. मैं ये दोनों पेपर Ctrl+C और डेस्कटॉप में जो मैंने वॉच फोल्डर बनाया हुआ है इसमें डाल देती हूँ, ठीक है. तो मैंने कहीं से भी कोई दो पीडीएफ लिए अपने और उनको मैंने वॉच फोल्डर जो भी मैंने बनाया हुआ था डेस्कटॉप पे उसमें डाल दिया, ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अग्रवाल 2013 2015 के दो पेपर्स हैं, ठीक है. नाउ आई एम स्टॉप शेयरिंग एंड आई विल शेयर माय मेंडले डेस्कटॉप विद यू. Okay, so let's see. Just a second.
it is not, actually it is not showing. That is why I'm, otherwise it does, definitely does. It shows in the recently added one. Why isn't it doing so? Just a second. Yeah. So, Dr. Srishti, I would like to ask you, am I audible? Yes, ma'am, you are. Yeah. So, as right now we're working on watch folder, so this Mm-hmm. is in addition to what we are doing, we are just creating on desktop and then we are trying to synchronize it here. So what I'm trying to ask you is, like in this watch folder, it means there are reference material, not from Mendeley only. We had collected it from other sources also, Yes. right? So will it be permissible, though these papers are not the sources which I actually cited through Mendeley? So will not it That is be absolutely okay, copyright ma'am. or something, The or doc will Mendeley allow us to take that also as the part of their one of their vertical within that particular official Mendeley software? Yeah. Yes, ma'am. The idea is that Mendeley will not differentiate whether it is from an Elsevier journal only. It can be from any part of the world. It can be from any publishing house. It can be Okay. anything. It could be a journal paper. It could be book chapter. It could be a book. It could be a report. Anything. So Okay. Mendeley will take any PDF. It is not necessary. It is only for the searching that Elsevier index journal will be there. But otherwise, you can include anything. Okay. It Okay. could be a newspaper article also. Anything that is in the PDF format. This is what you're Right. saying. Right. Okay. So I would. I don't know why this is not happening, because I mean I do it generally, but I don't know. Just a second. But where it was supposed to be visible under the It file, was. or It was. where are you looking up for that particular folder? For example, I had added these two PDFs in the watch folder Yes, that we've I seen had on that. my Yeah. desktop. Yeah. Now, when I had added it and I assigned it as a watch folder and I've added these two PDFs, I want to see in my recently added whether these two PDFs should come here. They should be here. I mean, they should be automatically uploaded. Or maybe what has happened, I'll tell you why it is not showing. Maybe because these are already there in my desktop, but still they should show. I mean, they should show. Okay, anyhow, we'll come to this. I'll check on this and we'll see to it maybe after the session if there's time, because let us complete whatever is there for today. And if the time allows, I'll do it today, else I'll do it tomorrow. Okay. Okay. So watch folder is one thing that is there. So, okay. Now coming to this, add entry manually. This is something that Mendeley gives you an option that for a particular for a particular paper or article or any book chapter. See, categories are there: book, case, any computer program, conference proceedings, generic, hearing, journal article, magazine, patent report, any kind of PDF that you can do, be it thesis, web page, working paper, anything of that sort can be uploaded on Mendeley. Now, here in manual entry, basically you write everything on your own, like you're writing authors, journal name, year, volume, everything on your own. Generally, as researchers, we don't do this. I mean, there's no point doing it. We just import the PDFs or we import the references or PDFs through the Mendeley web importer that we'll talk about tomorrow. So tomorrow is going to be, it will give you a clear picture as to what are the other ways of importing. So this we generally don't do it, but sometimes for reports and all, sometimes, for reports, the exact same, all the bibliographic details are not, do not automatically get extracted. So we have to, for that, we have to generally write, right? All of this, but we generally, I mean, we don't do this manually. Manual entry is not needed. All right. So this is synchronize. It's the same thing as this particular green option here. Now this is add folder. Add folder is nothing but the same thing as create folder, right?
when you create a folder here, now let me see. For example, if you create a folder ideas 2, right? So there is a folder called ideas 2 over here. Okay, now I want to add a subfolder. मेरे को अलग folder नहीं चाहिए. Suppose ideas 2 के अंदर भी मुझे एक और folder चाहिए. So I click on ideas 2 and then under folders plus folder sign is there. So I have made a subfolder under ideas 2, which is saying that some fancy idea. Right? So there's a subfolder created. Okay, I hope that is clear. Now, for if I want to delete it, I go to this and I just press on the delete button, right? And the action, remove folder. So yes, so the folder is removed, right? I click on the delete button and I delete it. Groups, it's just the same thing. If I want to create a group, I can create a group, right? Now coming to here, all documents, that all the documents would be shown. Another important point I want to highlight is that all documents and folder, these are two different things in a sense that if there is a paper in a folder, suppose ideas 2, if there is a paper, and if I delete that paper from the folder, that does not mean that it will be deleted from your library all documents. No. For example, what happens जब हम अपने डेस्कटॉप पर फोल्डर्स बनाते हैं, अगर हमने वो फोल्डर में से पेपर डिलीट कर दिया, that means it will be deleted forever, right? It will be deleted, it will go to the trash, right? But मेंडले हमको ये ऑप्शन देता है कि हम फोल्डर, जितने भी हमने फोल्डर ये कलेक्शंस बनाए हैं, इस फोल्डर में से अगर हम कोई पेपर डिलीट कर देते हैं तो वो ऑल डॉक्यूमेंट्स में डिलीट नहीं होगा, वो फिर भी लाइब्रेरी में रहेगा. अगर मुझे कोई डिलीट सही में करना है, आई वांट टू डिलीट इट फ्रॉम द लाइब्रेरी आल्सो, देन व्हाट आई डू इज आई हैव टू गो टू ऑल डॉक्यूमेंट्स, देन मे बी like I have to go to all documents and search it. ठीक है, तो वो ऑल डॉक्यूमेंट्स में सर्च हो जाएगा. सपोज अग्रवाल, अब अग्रवाल का 2015 का पेपर है, ठीक है, इसको मुझे डिलीट करना है. ओके, I want to delete it. मैंने delete button दबाया, I clicked on delete here, and then वो delete हो गया. तो all documents में से delete हो गया. तो अब it should come to my trash. वो trash में मेरा पेपर आ गया है. Okay. Now, what I want is, suppose I want another paper. हाँ. Okay. ये पेपर है, सपोज मेरे ICSSR हेल्थ करके कुछ है, इसका फोल्डर, इसमें मेरा ये पेपर है, डेनिस हमिल का पेपर है, ठीक है, हाउ इफेक्टिव इज नजिंग, डेनिस हमिल. नाउ आई डिलीट इट. ओके, ये मेरा फोल्डर में से डिलीट हो गया है, राइट? नाउ आई गो टू ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड नाउ आई सर्च डेनिस. क्या दिखाई देगा वो? यस. Can you see this paper, Dennis Humble का पेपर, How Effective is Nudging? ये मेरे all documents में है, पर ये मेरा सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट में से डिलीट हुआ था, all documents में से हमेशा रहेगा, right? Okay. Now, so I hope this is clear. Unsorted मैंने ये कहा था, ये सारे मेरे unsorted पेपर हैं, मतलब that means they are not a part of any paper, any folder. ठीक है, किसी भी फोल्डर का ये पार्ट नहीं है. Now, file is done. Edit is very basic, the same things, cut, copy, that you can do with using your keys and all. Okay, library as citations, library as table. Okay, now I will come to this. Before that, okay, somebody has written कि अभी पेपर भी लिखना नहीं आ रहा है, सो लिटरेचर रिव्यू भी नहीं आ रहा है, तो मेंडले कैसे मदद कर सकता है? सर, मेंडले मदद बेसिकली आपका इसीलिए कर सकता है कि जब आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो आप कुछ कहीं ना कहीं सर्च करेंगे, कुछ ना कुछ कीवर्ड्स आप ढूंढेंगे, अपने पेपर्स ढूंढेंगे, जब आपके सुपरवाइजर आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे.
तो बेसिकली जब आप पेपर सर्च करेंगे तो उसको कहीं तो स्टोर करेंगे, तो ये आपको वो स्टोर करने में, ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और बाकी के जो दोनों फंक्शंस हैं, वो डाउनलोड कैसे करने में हेल्प करेगा और साइटेशन करने में कैसे हेल्प करेगा, वो हम कल बात करेंगे। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ इट विल बी क्लियर टुमारो कि और क्या हो सकता है। अभी तो आप ये तो आई होप सबको समझ आ गया है कि ये ऑर्गेनाइज कर रहा है पेपर्स बहुत अच्छे से, राइट। हम इसमें से सर्च कर सकते हैं, ओके। नाउ अनदर थिंग इज what I was telling about was that all documents recently added, recently read, all of this is done. Now let's talk about view. When I was talking about view, I wanted to tell you अभी हम क्या देख सकते हैं, ऑथर का नेम, टाइटल, ईयर, पब्लिश्ड कौन सा जर्नल है, कब ऐड किया मैंने अपने मेंडले लाइब्रेरी में, वो भी डेट आई हुई है, राइट। नाउ आई कैन डू व्हाट, आई कैन सी लाइब्रेरी एज टेबल, तो ये टैब्यूलर फॉर्मेट है, राइट। नाउ लाइब्रेरी एज साइटेशंस, नाउ सी मैं कहां पर गई, व्यू करना था मुझे अपना लाइब्रेरी, किस तरीके से, साइटेशन के तरीके से व्यू करना था, राइट। नाउ ये मेरा साइटेशन आ गए हैं। साइटेशन की बात एक्चुअली हम कल करेंगे, सो इट विल बिकम मोर क्लियर कि साइटेशन हमें का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ये साइटेशन का फॉर्मेट है कि व्हाट इज द रिपोर्ट, रिपोर्ट का नाम क्या है, ईयर क्या है, कौन सा क्या कहते हैं ये, विच इज द ओवरलाइंग यू नो टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, एंड रिपोर्ट का DOI क्या है, ये सब उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट 2020 में जर्नल ऑफ इकोनॉमिक साइकोलॉजी हमारा, यू नो व्हाट इज द इशू एंड ऑल ऑफ दिस, यू नो, सो दीज थिंग्स आर गिवन. We'll talk about citations tomorrow. That is why I'm not emphasizing on it today. And it's time to yes, ma'am. And to give them the instructions what they're supposed to do tomorrow, and we'll take the questions. It's already 4:18 on board. So, okay, ma'am, give me 2 minutes. I'll wrap it up. Yeah, it's up to you. And you just tell all the participants आज का उनका जो homework है कि वो करेंगे क्या, घर पे कैसे क्या डाउनलोड करना है, क्या उनको अकाउंट बनाना है, so that it will be easy for them tomorrow to practice with you parallelly, so that as we are saying, today's session was like you have given them the instructions, but I can understand it's very tough to understand in a day or two. So tomorrow yes, they will open even an account. It will be easy for them. Most of them will be able to follow your instructions. So sure, yes, you can continue, but in 5 minutes. Okay. Yes, ma'am. I'll wrap up. Yeah. So view, I said citations. No, I'll go with, I have gone with tables again, right? So all documents, and it is my tabular format again, right? Okay. So talking about that, let's see tools. Or citation style. Now this we'll talk about tomorrow. What is citation? What is a reference? What are the various styles? We'll talk about all of this in detail tomorrow. Okay. So I'm not going there. Now, this is show document details. It is same as doing this. Now that I have not, suppose if I select a paper and if I go to say tools and no, if I go to view and say show document details, तो जो हमने web version में पहले देखा था, ये यहाँ से operate होता है. इसमें ये मैंने ये वाला select किया हुआ paper, suppose ये वाला, and I go to this. So this is my document details, same as what was there in the web version. I hope that is clear. Tags, keywords. Now a lot of you ask keywords. So जब मैंने PDF डाउनलोड किया था या रेफरेंस डाउनलोड किया था, ऑटोमेटिकली ये कीवर्ड्स आए हैं, ये मैंने नहीं डाले हैं. So that means जो जर्नल पेपर में कीवर्ड्स होंगे वो सेम कीवर्ड्स में आए हैं. ओके. नाउ अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू इम्पोर्टेंटली, ये दोनों एस्पेक्ट्स हम कल डिस्कस करेंगे. चेक फॉर डुप्लीकेट्स. नाउ डुप्लीकेट्स का मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट होता है डुप्लीकेसी का. सपोज ये मेरा पेपर है और इस पे मैंने 2 बार क्लिक किया, तो इसका मतलब ये 3 बार ये पेपर हुआ है. Actually, when I had started with Mendeley, I already have had a lot of papers in different folders and subfolders and so on. So suppose if I have clubbed it all, and I have, uploaded it on the Mendeley, तो बहुत सारे duplication हो गया suppose. So what I can do is I can check. First जो ये पेपर है, अभी इसको मैंने जब डबल क्लिक किया पेपर को, तो मेरे 3 वर्जन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट. यहाँ पे लिखा है कि नो कॉन्फ्लिक्टिंग फील्ड्स,
राइट, कि यानी कि ये चेक हुआ हुआ है सब कुछ. ऑथर नेम, इसका मतलब ये चेक हुआ है, मतलब दिस इज चेक. ये तीनों पेपर्स में सेम ऑथर नेम है, ये जर्नल भी सेम है, ईयर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है. दैट मीन्स सब चेक मीन्स एब्सोल्यूट डुप्लीकेसी. और ये भी कह रहा है नो कॉन्फ्लिक्टिंग फील्ड्स. अगर ये अनचेक होता तो ये कन्फ्लिक्टिंग फील्ड होता, मतलब कहीं ना कोई डिफरेंस है, ये ऑटोमेटिकली मेंडले एक्सट्रैक्ट करता है. राइट, सो व्हाट आई विल डू इज आई से कंफर्म मर्ज. तो मेरे वो तीनों आर्टिकल्स मर्ज हो गए, मतलब एक ही कॉपी फिर बची, अलग अलग कॉपीज नहीं बची. तो ऐसे बहुत सारी डुप्लीकेसी हम चेक कर सकते हैं. राइट, अगेन आई कैन से कंफर्म मर्ज, confirm. I hope that is clear. That way, obviously, we save up on space and duplicacy is reduced. Okay. Now you can close it using this. Now so this is tools. Tools are done. Coming to options. Options में आपका document details. This is not really needed. Watch folder is something that we will do. I'll do it first thing in the day. Okay, tomorrow. And देन दिस इज हेल्प गाइड्स हैं, ये मेंडले की ऑनलाइन हेल्प गाइड्स हैं. ठीक है, so that we can I'll put the link to the guides. I have already put the links of the guide in the PPT also. Okay, now last thing I want to talk about, just a quick search option. पर search अभी मैंने आपको बताया कि search is about say anything that you want to search, like for example health. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ में मेरा कोई भी पेपर जिसके टाइटल में, पेपर के अंदर, ऑथर नेम में कहीं पे भी हेल्थ वर्ड आएगा, वो मेरा पेपर यहाँ दिख रहा है. राइट, अब मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट दैट हेल्थ बिहेवियर. ठीक है, ओके. Now it will check both, वो वाले पेपर्स जहाँ पे हेल्थ भी है और बिहेवियर भी है. ऑल राइट, सो दिस इज द होल आइडिया. इफ यू हैव टू वर्ड्स रिटन एंड यू नो, तो इट विल टू वर्ड्स भी लिखो या फिर बीच में एंड लिखो, इट मीन्स द सेम थिंग. दैट पेपर्स wherein both the words are there, only those particular papers will be shown to you. Okay, so yeah, with that we'll end the session for the day. Before I take on questions, let me tell you that the main task or the assignment for today is for you. Immediately after the session, I will share the PPT. All right. So you have to, all of you have to first log into your, you have to register yourself for the Mendeley account, Mendeley web, right? Then you have to say you try to first do all of that formality. Then you install Mendeley desktop also. Okay, and the next thing is that I will also share links to some of the YouTube videos wherein you can easily download on it'll be like a tutorial on downloading Mendeley desktop, right? So that will really help you, because I understand what happens in this particularly your version of your system or laptop, or it will also depend कि आपका ना किस तरह से होता है. So I mean that also you have to see. All right, so for that I would say that I will share it in the, I'll share it with the Usha ma'am, and I think they can share it in the WhatsApp group, the video tutorials. Okay, and PPT also I'll share. Now, so two things, Mendeley web and Mendeley desktop, both of them have to be installed, or Mendeley web you have to register, Mendeley desktop you have to install on your laptop or desktop. Okay, now you can ask me questions. We still have 4 to 5 minutes. Okay, Srishti. So I think you can stop sharing your screen so that we can interact much better. And yes, before we proceed with the questions, I think Monica ma'am, it is, and Rohit sir is not presently here. He has gone for some work. So collectively, I and Monica ma'am, and I think Vitchal sir is also with us in panel link, and all other people, and our
some senior faculty members are also in group. So Srishti ma'am, first of all, it was really a wonderful and a very insightful session from your side. I can see the remarks in the chat box as well. Pinpointing 2-3 things very quickly. सब कुछ एक दिन में नहीं आता, सीखने में वक्त लगता है, इसी को रिसर्च कहते हैं. और अगर हम चाहें कि हर चीज इंस्टेंट मैगी या इंस्टेंट नूडल्स की तरह हो तो नहीं होती. इसीलिए जो रिसर्च की क्वालिटी है वो आजकल कम हो रही है, क्योंकि हमें सब कुछ जल्दी में अच्छा चाहिए और अचानक से सारे आंसर्स चाहिए. तो पेशेंस जो है वो एक जो मेरा एक वीडियो भी है, मैंने 3 P's की बात की है, उसमें एक P पेशेंस भी है. पेशेंस रखना पड़ता है हमें जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम शोध करते हैं, और सब कुछ एक साथ हम बता भी नहीं सकते आपको. कुछ चीजें जो बहुत पॉपुलर हैं, जो बहुत हेल्पफुल हैं, जो बहुत प्रूव हो चुकी हैं कि yes, it is indeed a very nice tool. Like for an example, if you say SPSS, it is a very nice tool. But आज की डेट में आप R भी यूज करते हैं, आप मैटलैब भी यूज करते हैं, आप क्वालिटेटिव सॉफ्टवेयर जिस पर आपकी खुद की कमांड बहुत अच्छी है, एनवीवो, आप वो भी यूज करते हैं. इकोनोमेट्रिक्स के लिए ग्रेटर है, वो भी यूज होता है. सो प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस आर देयर, एंड इसीलिए हमने टाइटल किया है यूजिंग टेक्नोलॉजी. Use what is apt for you, use what is comfortable for you, use what is which is having the most relevance in your research. गूगल स्कॉलर की हम बात करते हैं, गूगल स्कॉलर बिल्कुल अच्छा सोर्स है, लेकिन जब आप इंडेक्स और साइटेशंस की बात करते हैं तो अगर आप गूगल स्कॉलर से कुछ साइट करते हैं तो कई बार उसकी रेलिवेंस नहीं रहती. एल्सवेयर अगर देखिए तो बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है रिसर्च का. आपने साइट किसको किया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है. और हाल ही में हमारे यहाँ सारे टीचर्स जो मेरे यहाँ हैं, दे ऑल नो हाउ मच due importance is being paid to referencing, and so far the citation style is concerned by our honorable vice chancellor sir, because that is actually showing what all you are referring for your research work. So this is was a very wonderful session, and it will be continued tomorrow. So take time to learn, to read, and even the one important thing of with our workshops, especially like I'll take a name of RNTU, and now we are associated with Oro. Things are not yet over after STTP. I have attended number of workshops at my time, and I think other teachers who are here must be agree with me that कई बार workshop के बाद होता है कि okay, be in touch once you have any query, talk to us, mail to us, and then they don't respond. But the USP of our STTPs or our workshops or our research methodology, you can say details, is workshops are that even after the session, if you need any kind of support, we give the resource person details, and resource person tries to answer the optimum and the proper questions which they feel so, because sometimes some irrelevancy also comes in questions. So it depends on what question you are raising out, and then whether it is apt to answer to that. So that is why it is very important. One day, yes, we cannot understand everything. So Srishti ma'am have given an assignment, and Srishti ma'am, please post your PPT in that STTP core team which we have created WhatsApp group. I'll be sharing with all the participants, and very quickly I'll be taking some questions because in between we have taken certain questions. So I think Dr. Basanti ma'am has have shared one question: how to collect reference of a manuscript automatically by online mode. Okay, ma'am, this we will do tomorrow when we do Mendeley Web Importer. So I think that will be very clear tomorrow. Yeah. Okay, and there is no such tool, Bobinaranji, which will be tracing out any kind of plagiarism. Just before this session, I was attending one session on academic integrity. So plagiarism is nowhere being traced out. Yes, there's another softwares. So we will have a separate session of plagiarism softwares, how we can trace out the plagiarism, by the eminent chief librarian from Aisect, Dr. S.K. Pathak. He will tell you what all kind of, you can say, things we are doing in present time and how we should avoid that to become more authentic in our research process. So that is a question for the next session. I'll be taking those questions which are relevant to the present session. So in that way, I think, Srishti, it's not, we have taken a lot of questions earlier only, and you said that it is on app also, it is available, and then you properly have shared the sync between these three things, the app and everything. So I think number of remarks are there who are saying that the session is easily understandable, and thanks for the excellent clarifications, and thanks for this insight.
One more question I can see in this question answer, wherein one MBA student of our department, she's asking that if I'm working on a topic which is a very less literature of related to my particular area, so how I can review the literature for the same? Any idea on it? Ma'am, I mean, what I would say is that, I mean, many a times, I mean, I would rather say it's nice that it is a very niche area that you are trying to capture. But again, maybe, I mean, if it is a new area, you'll have to draw parallels with, in an interdisciplinary sense. So if there are some constructs which might be, I don't know about your area, but then suppose even in management, whatever little I know about management, there is a lot of you can say psychological, there is a lot of social cultural contexts that are there, so you'll have to tap all of that, and you have to, first of all, irrespective whether the area is new, the methodology is something, I mean, variables is something that you have to say explore on your own, but methodology is something that you'll have to reinforce from other research, so that you can corroborate it. आप कहीं ना कहीं उसका एक जस्टिफिकेशन दे पाए कि मैंने अगर ये वेरिएबल्स लिए तो क्यों लिए, अगर नए भी हैं तो उनको वैलिडेट करें, उनको उनकी रिलायबिलिटी चेक करें, एंड फिर मेथोडोलॉजी वाइज कहीं ना कहीं से आप कोई फ्रेमवर्क या कहीं ना कहीं से कोई रेफरेंसेस ड्रॉ करें ताकि वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जस्टिफाइबल हो. सो दिस इज व्हाट आई कैन in a brief time I can tell you. Yeah, and this is usually ask this question, the researcher asks this question that if my area is little bit new, then definitely I always answer in that way that you may have some subject or some concept related to it. Like she's, I think, working on imposter syndrome. If I'm not wrong, Ayushi must be asking about the same, because she is a person of science and then now she's into the management. She's working with me, and let me acknowledge her. She's a very good researcher, a young researcher, working on a lot of points. So always curious to know something new. So definitely there are a lot of ways, and that's why we say that these 6 months of PhD coursework specifically, and even our times also, 6 months or maybe sometimes more than 6 months was given to us to do this comprehensive literature review. I must say you people are really well versed with all these technologies wherein that you can create your own library. If I remember my time, I was carrying my file entire time to my guide, taking the hard copies of my literature reviews, tagging it, flagging it, and even till the time of submission of our final defense, it was with me. Anybody can ask me. So then I have to show that this much papers I have reviewed, and then you used to visit a lot of libraries, a lot of you can say institutions of eminence to collect the literature for the same. So now this is the importance of the technologies, that things are at your one click. The only thing is that you have to click, that's it, and then you have to do the right click. So with this, I think Dr. Neha ma'am is with us, Dr. Usha ma'am, Dr. Diti ma'am is also with me, the deans of and the HODs of respective department. Ruchi ma'am is also here. So not giving proper vote of thanks today to Srishti, because Srishti will be with us tomorrow, and she will be giving us the hands-on session tomorrow once again. In continuation of this session, and on 26th we have the expert person for this web Mendeley session, Vittal sir from Oro University. So these 3 days are dedicatedly given to this software, because observing the importance of the literature review in our thesis, in our research paper, or whatever you write, जिस भी भाषा में आप लिख रहे हैं और जिस भी सब्जेक्ट में आप लिख रहे हैं, साहित्य समीक्षा के बिना, रेफरेंस के बिना आपकी लिखावट अधूरी है. और एक बात और भी है कि चैप्टर 2 जो जनरली हम डेडिकेट करते हैं लिटरेचर रिव्यू को, उसके अलावा भी जितने चैप्टर्स आप लिखते हैं वहां पर भी आपको रिव्यू को रिफर करना पड़ता है, दूसरों के जो काम है उसको रिफर करना पड़ता है, एंड दैट इज शोइंग द क्वालिटी ऑफ योर थीसिस, which sometimes a scholar missing it out because they take a content from any other source and directly keep it in the thesis or in the research paper, and that is why it comes into the plagiarism. So all things are interrelated, and all the budding researchers, all the teachers have to learn this art of reviewing, how we can use the technology for the review, and how we can continue with that. So I think today this session was the beginning of this citation management using Web Mendeley.
tomorrow and day after tomorrow, we will be continuing. So tomorrow, Dr. Srishti will continue with us. And on 26th, Vittal sir will be with us to give more insight about this. And he will be also giving one additional certificate to all the participants by WebMinday. So that is an addition, value addition to our all the participants. So with this, taking the permission from all the participants and panelists, and also from our expert, to wind up the today's session. We'll meet tomorrow, although it's Sunday, but we are working because researchers have no holidays. So we'll be working, and we all will meet at 2:15 p.m. Okay, ma'am? Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Srishti ma'am. Thank you to all. Thank you, ma'am. Thank you.